हेलो हाय गुड इवनिंग स्वप्निल। अरे बताते ना मैं नया थंबनेल बना देता। चाहिए मेरे को बहुत सारे थंबनेल चाहिए सब गेम्स के पता है। बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। एनीवे या टुडे टुडे वी आर गोना कंप्लीट अरे यार फ्लैश बैंग। टुडे वी आर गोना कंप्लीट द आर्कन क्वेस्ट होपफुली। एंड सिंस 4 घंटे की स्ट्रीम है तो नया वाला आर्कन क्वेस्ट तो नहीं हो पाएगा, पुराना वाला हो जाएगा डेफिनेटली। एंड हाय रिजदीप, हेलो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? लाइक करो स्ट्रीम पहले। हाँ और उसके बाद फिर नहीं, पहले हम पुल करेंगे उसके बाद हम क्वेस्ट करेंगे। अभी लोग को आने दो फिर पुल करेंगे। टेस्ट रन करूँ क्या तब तक मैं? आज मैंने ब्लू ब्लू पहना है, फाउंटेन की ड्रेसिंग वाला कपड़े। न्यू आर्कन क्वेस्ट 4 आवर्स का है, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ है बट इट्स वर्थ द टाइम एंड ट्रबल। मैं तो खाना खा रहा, आराम से मजे करो खाना खाते हुए देखो। एंड लेट मी टेस्ट फुरीना। लाइक यार इसके बाद छोटे कर दिए इन्होंने। आई एम सॉरी फॉर स्क्रीमिंग बट डिडंट ऑल द टाइम शी हैड लाइक दिस पोनी टेल पीछे एंड शी उसका ब्लैक आउटफिट लाइक एंड पोनी टेल था। व्हाट द फक, व्हाट्स हैपनिंग? मेरे को क्या लग रहा है उसके पास विजन भी है। मेरे को क्या लग रहा है, आई एम गेसिंग, प्लीज डू नॉट स्पॉइल, प्लीज डू नॉट स्पॉइल। अलाइनमेंट चेंज करो मतलब? अलाइनमेंट चेंज करो मतलब क्या? टेस्ट रन करे, न्यू एरिया खोले, चार्ज अटैक करो। Ooh. The show begins. Oh, this is so cool. मतलब उसके बाल उगाते हैं when she is doing the charge attack. What is this, bro? What is this? Oh, this is nice. She changes outfit and then Nimua's alignment. Bro, मेरे को आज तक नहीं समझ आया ये निमुआ और ओसिया क्या होता है, पता है? अरे अरे Is she a support? पहले तो ये बात बताना, is she a support? Everybody stand back. एक से डैमेज करती है, एक से हील करती है। What? Let my name echo in song. May I present? तुम लोग कैसी लगी लाइक? How did you guys find it? Is she like difficult to play? ये गेम कौन सी है? ये गेम कौन सी है मतलब? Time to shine. Come on out. I'm going in. Let my name. क्या टाइम पे खत्म हुआ है? ओके पहली बार देख रहा हूँ ये गेम। हाय स्वप्निल, वेलकम। दिस गेम इज कॉल्ड गेंशिन इम्पैक्ट। हाँ कूल, सही है यार। बाइशू तो बड़ा बेकार कैरेक्टर है। इसके वेपन मैनर अगर पुल करोगे इट्स लाइक नॉट बेकार बट लाइक आई पर्सनली नॉट गोना पुल फॉर हिम। You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer.
Let me weave you a verse. Rain outlines. Seems like an emergency. Mind the side effects. Let's spark things up a little. Come a little closer. Come a little closer. You're in. What's it done? बाइजू खांसी की रानी चिकन पुलाव विद सीरियन कबाब खाओगे? सीरियन कबाब, आई वुड लव टू हैव इट. मैंने अभी पुलाव और एग करी खाया. Remember, health comes first. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. वैसे मैंने बाइजू You're का in for स्टोरी a का little किया नहीं है तो मुझे shock. Come a मालूम नहीं little एक्चुअली क्या closer. होता है. Rain cutter. You're in for a little shock. Come a little closer. Seems like an emergency. The doctor will see you. ये शील्ड देता है ना अपने अल्ट Let's से. spark things up a little. एंड याई जैसे वो अपना ई से स्नेक निकालता है, राइट? Witness the power of Gua. भाई मुझे अच्छी लगी सब डीपीएस से पूरा टीम का डैमेज बफ करते हैं. अच्छा भाई जो बेकार नहीं, बस हीलर है, सो नथिंग स्पेशल देयर. हाँ आ गया. बाइजू का स्टोरी बहुत मस्त था, खींच के देखा था, इमोशनल हो गया था. लोग करूँगी स्ट्रीम पे ही करूँगी मैं. यार कौन कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद करूँगे. चलो पुल करें क्या? मेरे पास ज़्यादा प्रीमोजेम्स नहीं है. कितने प्रीमोजेम्स हैं मेरे पास? 782 है. 2 पुल्स हैं. 2 पुल्स हैं मेरे पास, नहीं एक की पिटी है. सो टेल मी व्हाट शुड आई डू? कंटेंट ब्लब 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 ब्लब. यस रेस्ती, पानी के अंदर हो आप. अगर मेरा फिर से हार्ट बीट जाता है तो इट्स इम्पॉसिबल. The wind rises. ओह ऑफर इतना कब कलेक्ट कर लिया मैंने? तुम्हारा कितना लेवल हो गया? चांसेस है निकलने की. आज बहुत लोग 50-50 विन हुआ है. कुछ नहीं तो लगा था C3. वाओ ओके. पहले ज़रा इधर देखो क्या सीन है. द ड्रेस सूट्स यू, लुकिंग गॉर्जियस. थैंक यू. ड्रेस तो नहीं है, ऐसा टी शर्ट. पता नहीं कब कर लिया. कितना पिटी हो गया ये? 50 के ऊपर चला गया पिटी, पता है? स्टैंडर्ड बैनर का कभी तो कुछ अच्छा निकला है. तिनहारी ये मिल जाए खुश हो जाऊंगी मैं. 60 हो गया है. 59 हो गया है. 35 हो गया. इस पैच में 40 मैक्स है. अच्छा वो जगह कहाँ नया आया है ज़रा वो भी देखे. कौन सा एरिया एक्सपैंड हुआ है? अच्छा इधर हुआ है. तो ये बीच में जो ये ब्लैंक एरिया है इसका क्या होगा? कुछ आइडिया है? इधर एक्सपैंड हुआ है. ये एक्सपैंड होते होते क्या इसको टच कर देगा? वो तुम देख रहे हो कितना अजीब सा मैप लग रहा है. ऐसे करके यू शेप में बन गया है. आई होप दे फिल दिस थिंग विद समथिंग. मैं बताता हूँ जगह कैथरीन के पास ही करूँ. कैथरीन के पास क्यों करूँ? इधर करूँगी. अरे 2 पुल्स में क्या ही निकलेगा. लीवे का भी खुले जाएगा. अच्छा हाँ लीवे एक्सपैंड होगा. लीवे के भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, पता है? बेटो चलो कुछ नहीं मिला गाइस. हाँ मैं क्या कह रही थी, आई एम गोना सेव ना एंड बाय दिस फॉर माय रियो. सही है क्या? ब्लैक क्लिफ आ गए थे रियो के लिए बिकॉज अभी कोई वेपन उसको देने लायक वित्सित है बट मेरे को वित्सित देने का मन नहीं है. इट डजंट गो विद द एस्थेटिक, पता है? एस्थेटिक के साथ जाता नहीं है. वित्सित ही है. आई मीन पवोनियस वित्सित. और तो मेरे पास कोई बुक नहीं है.
ये है एक बैलेड ऑफ द बाउंडलेस ब्लू। तो मुझे बैडू नहीं मिला, मेरी C6 हो जाती। C6 हो जाती। बैडू को कौन बनाता है? और सा कैरेक्टर बिल्ड करते हो क्या तुम लोग? मेरे तो देखो C6 का, मेरी तो अब जाके C3 हुई है। ये देखो मेरे पास कैंडेस नहीं है, किरारा नहीं है, ये भी C2 हुई है बस। लीसा तो चलो समझ आता है, लीसा मिलना मुश्किल है। मिका, सायू, नोएल। ये देख रहे हो, मेरे को बहुत दिनों बाद जाके गोरू मिला। मेरे पास गोरू ही नहीं था। तो कह रहे थे गोरू बिल्ड करो, मैंने कहा नहीं है, गोरू मेरे C6 है ही नहीं, कहाँ से बिल्ड करूँ मैं इसको। C1 चीची लमाओ। जीन मेरी C2 हो गई है, पता है। जीन पे जीन मिले जा रही है मेरे को। एम्बर C1 है, ये मेरी शिन्यान नहीं है, C4 ही है बस। बैडू फुल काउंटर अटैक ओपी एंड मम्मी मेरी 2 साल पहले मिली थी C6, 2 साल पहले है। मेरी बारबरा नहीं है, देखो मेरी बारबरा तक C4 है। ये चोंगिन है, लेला, हाइजो। ये भी नहीं, मतलब मुझे ज़्यादा मिले नहीं है 4 स्टार कैरेक्टर्स ना। मोस्टली मेरे को वेपन ही मिलता है घटिया घटिया से। कचिंग C0 कावे। मेरा रेजर तक C6 नहीं है। सबसे पहले C6 मेरी डियोना हुई थी, फिर उसके बाद ये हुई थी फिशल काफ़ी मिली है मेरे को। हाँ ये देखो, शांगलिन नहीं हुई है मेरी अभी तक। शांगलिन को भी C6 करना है। आई एम सो हैप्पी मेरे को बेनी नहीं मिला, पता है। एक बार यहाँ मिल जाए, फिर उसके बाद अगर मेरे को गलती से C6 बेनी मिला, मैं तो एक्टिवेट कर दूँगी। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक्टिवेट कर दूँगी। बिकॉज आई हैव दिस। यहाँ पे जब वो नोटिफिकेशन बन के आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुझे मम्मी भी नहीं बोल सकते, भगवान क्या जुल्म है। अपनी उम्र देखो, दूसरों को मम्मी नहीं बोलोगे, खुद के बच्चे होने चाहिए इस टाइम पे। मेरे को व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ग्लोइंग स्किन? ग्लो कर रही है क्या स्किन मेरी? बट थैंक यू ग्लोइंग स्किन का कुछ भी नहीं है। आई जस्ट डोंट यूज मेकअप, दैट्स ऑल। आई मीन फाउंडेशन और ये सब जो लगाते हैं ना लोग, वो सब नहीं लगाती। आई जस्ट यूज अ फेस वॉश एंड क्रीम भी मैं साल में एक बार लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर। आई मीन आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन टू बी ऑनेस्ट, यू नो, दैट्स ऑल। जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना अच्छा स्किन रहेगा आपका। तो इसलिए एक्ने वगैरह तो जो होते हैं मेरे को, वो हार्मोनल वाले होते हैं, यू नो। एक्सटीरियर का ऐसा कुछ नहीं है। चलो किसका अकाउंट पहले खोले हम? मोना ड्रेस पहन के आप अच्छे ग्लो कर रहे हैं। मोना ड्रेस? मैं तो फुरीना बन के आई थी, सस्ता फुरीना कॉस्प्ले कर रही हूँ। इमामी क्रीम संतूर सोप, संतूर वंतूर नहीं लगाती मैं। पहले किसका पुल करना, जल्दी बताओ। स्वप्न लाभ का? मेरी निंगवान C6 है, बेडो को C6 करना था, दोनों की शादी है ना। क्यों शादी करा रहे हो तुम भाई? ब्लैक पैंट वाइट पैंट इज इक्वल टू फुरीना। हाँ मैंने ब्लैक पैंट ही पहने, ब्लैक शॉर्ट्स पहने मैंने। मेरा हो गया, तुमने पुल कर लिया। मैंने बोला था ना कि मैं पुल करूंगी। मेरी नोवेल C100 है, क्या बात है। हाय सैम, हेलो वेलकम। मैंने बोला था मेरे को पुल करने देना, तुमने खुद से पुल कर लिया। वाह, मेरा आईडी पास है। धोखेबाज स्वप्न। 12,000 विशेष जमा करके बोल रहे हो।
आईडी पासवर्ड मेरे को मैसेज करो तो जरा डिस्कॉर्ड पे फिर से। अनमोल को खोज के आना होगा। 70-75 कंट्रोल नहीं होता। नहीं नहीं बदमाश हो, अपने मेरे से बात मत करो अब तुम। बोला था फिर भी तुमने पुल कर दिया। तेजस्वी का भी करना है, अनमोल का भी करना है, तब तक तुम अपना आईडी पास दो। अनमोल और तेजस्वी को बुला लेते हैं। मम्मा अब इसमें से पासवर्ड कौन सा है, वो कौन सा है, ये यूजर नेम कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है? अच्छा नीचे वाला पासवर्ड होगा ना। सबको दिखा दिया मैंने। चौशल राज आईडी हैक। $133 wishes no फुरीना, बेचारा तेरारी मिल गया। This is what happens when you don't make me pull. You deserve it, हारना। मैंने बोला था, मैंने लोगों को बोला था यहाँ पे तुम मत पुल करना, मैं स्ट्रीम पे करूँगा तुम लोगों का। अब हारो। मैं कहाँ से धोखेबाज क्वेस्ट किया, कभी तुमने दूसरों की स्ट्रीम पे जाके देखना पड़ता है। रहने दो तुम, रहने दो जो तुमको तो स्पेशली बोला था, और मैंने भी नहीं किया। मेरी सिस्को अकाउंट खोलते पुल्स नहीं थे, तो जिसने मेरे पुल्स कर दिया फोन का बताते पूरा निकल गया, खेल भी लिया। नहीं रहने दो तुम, रहने दो, झूठे कहीं के। 133 विशेष में मैं 33 फुलियां निकाल देती, पता है। हाय पारस, हेलो वेलकम। कोड दे दीजिए चौशल राज, जीमेल वाला कोड। लेट्स गो। फुरीना पुल की मेरे पास तो गिन के 4 पुल थे, मैं कहाँ से फुरीना निकालूंगी, मैं सिंगल पुल वाली हूँ। हाँ, अभी हम अपने फ्रेंड के अकाउंट पे करेंगे। कैसे हो अभिषेक? ये धोखेबाज लोगों को देख रहे हो? मुझे तो फुरीना का वेपन नहीं मिल गया, क्या बात है। कहाँ का झूठा वेपन, नहीं वो भी बाइजू का। डू यू डिजर्व इट? आई होप you lose all your 50-50 और तुम I hope you lose your confirmed as well. confirm भी तुमको 90 पुल्स में आएगा। आए बड़े। नाइस है। हेलो थैंक यू नकल। मैंने 84 पेट्स। अरे मैंने रियो 10 ले निकाला ना, तो मेरे पास बचा ही नहीं। रियो 10 ले मेरे को 80 पुल्स में मिला था, तो ऑब्वियसली आई वुडंट हैव। मैं अभी फिलहाल तो F2P हूँ। शर्म आती नहीं है लोगों को, पता है ये एक प्रीमोजेम कितने मायने रखते हैं। देखो 9 पर प्रीमोजेम मिले। चौशल देख रहे हो? अच्छा न्यू के बाद मैंने पुल नहीं किया। न्यू विले पे मैं हार गई थी, तो मैंने ना वो निकाल लिया। He has wings. कितना बढ़िया लग रहा है। हाय विश, हेलो। नहीं हारूंगा मैं। श्री सॉफ्टवेयर चेयरमैन ऑफ अखिल भारतीय गेंशिन संगठन। तुम चेयरमैन हो, मैं CEO हूँ। भागो यहाँ से।
Things are about to get dicey. एक और विंग्स है? और कौन से विंग्स हैं? तुमने वो नया वाला विंग ले लिया? अरे यार ये वाला कहाँ से मिला? ये वाला कहाँ से मिला? What the fuck? Amazon Prime वाला? हाय ग्लूटेन, हेलो। हाँ नहीं, ये तो फाउंटेन वाला। ये वाला कौन सा? Amazon Prime वाला। हाय बुएर, हाय गुंजन, हेलो। Amazon का है वो, या तुमने मेरे को नहीं, मैंने ना पता है 4 वो करने पे 4 महीने लगातार लॉगिन करने पे मिलता ना, बट मैंने फिर 3 महीने ही किया था, शायद सैम ने बुलाया था, तो मैंने जब तक किया ना तो 3 ही बचे थे, 4 हो चुके थे महीने पूरे। बहुत दुख की बात है यार। ये वाला ना काजुआ पे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला विंग। अरे कितना प्रिटी है, मेरे को ना इससे ज़्यादा अच्छा तो ये वाला लग रहा है, अमेजोन वाला, प्राइम गेमिंग वाला। मैं स्टार रेल करके आ गया काम, चलो अभी पुल करेंगे हम चौशल राज का। अरे उसको बुलाओ ना, अनमोल को बुलाओ। इफ़ यू रियली वर गोइंग फॉर द रूलर ऑफ फाउंटेन देन शुड हैव गॉटन न्यू वाले फोरिना, जस्ट अ नो वन, जस्ट अ नो वन। अमेजोन प्राइम मेरे पास है, मुझे मिलेगा नहीं। बेसिकली अमेजोन प्राइम गेमिंग का एक ना बंडल आया था, तो ना वो कितना 8 महीने तक लगातार ना, तो मैं ना हर महीने लॉगिन करके वो बंडल क्लेम करना था। कुछ कुछ गिफ्ट मिलते हैं अगर तुम 8 में से 4 कंफर्म कर लेते तो तुम्हें ये विंग मिलता एंड 8 महीने के बाद। सो ये 8 महीने वाला काम है, 8 महीने मेहनत करके लिया इन्होंने प्राइम से, अमेज़न प्राइम के थ्रू। तो अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा, मेरा भी रह गया। यस, तो इन्होंने ना दिसंबर में चालू किया होगा ये करना, दिसंबर में आया था वो। कितने सारे क्वेस्ट बचे हुए हैं मेरे पास, तो आरू विलेज वाले क्वेस्ट भी नहीं। सॉरी अगेन। मैं क्या कह रही थी चौशल राज, आपको पता है ये सारे क्वेस्ट मैंने खत्म भी कर लिए। ये सोसी वाला, आरू विलेज वाला, सब खत्म कर दिया मैंने, पता है सब। और आपके इतने सारे बचे हुए हैं, क्या बात है, क्या बात है। आपने मेरे से कम क्वेस्ट किए, मेरे को तो क्वेस्ट ही नहीं मिल रहा करने को। अच्छा गाइस, कोई मेरे को गिफ्ट देना चाहेगा तो दे सकता है प्लीज। आई वुड लव टू हैव विंग्स। आई एम अ ह्यूज fan of dressing my characters according to their कितनी लड़कियां हैं देख रहे हो गाइस, लड़कियां ही लड़कियां हैं। चलो ज्यादा एक्सपोज नहीं करूंगे। I'm just waiting for him to come। क्या नाम रुको, किधर जाके पुल करें? अंडर वाटर जाके पुल करें क्या? अच्छा, लैबोरेटरी वाला मेरा बचा हुआ है 100%। ये नहीं किया। अच्छा, ये तो आज ही आया है ना, ये वाला नया रीजन आज आया है। थोड़ा सा देख कर आती हूँ कैसा है। नया वाला रीजन नहीं है। अरे गाइज, आई स्वेयर टू गॉड, मेरे को ना चैट ही नहीं दिख रहा था। मेरे को चैट ना यहाँ तक आया, सैड के बाद और कुछ दिखा ही नहीं, एकदम से सारे आए। माय बैड यार, मुझे लगा चैट क्यों रुक गई। हाँ ठीक है, समझ गया। एक्ट 5 इज़ आई टीयरिंग दिसंबर में आया तो ने अभी फेज में 2 में आया तो वो दोनों आया है भाई। KFC विंग वाला बेस्ट। मुझे तो अभी न्यू वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। गिफ्ट टू यू ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखने के बाद आई कैन से लड़कियों की चॉइस आजकल कितनी बेकार हो चुकी है, नो डाउट। लड़कियां लड़के बैठे मेरी चाट में, 8 लड़के ही हैं जो गेम खेलते हैं। हाय अनमोल, हेलो वेलकम। बताओ चौशल भाई कैसे बफर चाहिए, सॉर्ड वाली या कैटलिस्ट वाली? तुम जाओ GTA 6 खेलो, आए बड़े।
हाय अनमोल, I'm okay, आप कैसे हैं? पुल वुल तो नहीं किया ना क्या? आप भी धोखेबाज निकले स्वप्निल जैसे। पूरा भाई Imagine not having Wanderer. छी भाई। Act 5 same as tier like सुमेरु। आज फाइनली गेंशिन की स्ट्रीम पे टाइम पे पहुंच गया। हाँ तुम टाइम पे पहुंचे आज, पता है स्वप्न बचा सबसे अच्छा। ट्राई किया फुरीना? हाँ ट्राई किया। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ये विंग्स देखो कितने प्रिटी लग रहे हैं ना। मुझे क्या, मैं तो वॉन्डर लेके उड़ जाती हूँ सीधे, यू नो व्हाट आई मीन। फोर्जा एनीथिंग बेटर देन दिस। Into the wind. गाड़ी चलाने के अलावा और भी दुनिया में गेम्स होते हैं ना, तुम क्या जानो। दी इंडियन गेमर के नाम पे मैंने बस जिंदगी में 2 गेम्स खेले हैं, GTA 5 एंड फोर्जा, एंड आई कॉल माई सेल्फ अ गेमर। ऐसे नाम चेंज कर लो चैनल का नाम। दी ओनली कार में भी यू हैवंट प्लेड अ लॉट ऑफ कार रिलेटेड वाले गेम्स, यू नो। यू हैवंट प्लेड मोटो जीपी, मोटर स्पोर्ट्स वाले। अभी मैं इंसल्ट करने पे आऊँ ना। तमीज से आई प्लेड अ लॉट ऑफ गेम। यू मारियो नहीं पूछा मैंने। पानी के अंदर पुल करें क्या? किधर पुल करें? चलो आज अभी देखते हैं कितने पुल्स हैं। मोटर जीपी कार होता है, मोटर स्पोर्ट्स बोला मैंने, कार नहीं बोला। मैं फॉर्मूला 1 भी बोलने वाली थी, बट ही हैजंट प्लेड ईदर ऑफ देम। एम के, लेकिन फरीना इज नॉट एन आर्कन। यार ऐसे स्पॉइल मत करो ना प्लीज़ यार, मिस गाइडिंग विश कृपया करके स्पॉइलर ना दें, नहीं तो चैट से चटक लिए जाओगे परमानेंटली। चलो पुल करते हैं गाइस। क्या 50-50 है या फिर कंफर्म्ड है? 4 5 6 7। एक तो कंफर्म्ड है यार, क्या मज़े नहीं है कंफर्म्ड में। एसेटो कोस्टा, फोर्जा, ट्रेन सिमुलेटर, वैलो CS, कॉड F1, एपेक्स। ओहो, जब बुलाते तब तो आया नहीं जाता। वैलो CS खेला है, कॉड खेला है, फॉर्मूला 1 खेला है, एपेक्स कर रहा हूँ, फिर भी बहुत कम है। चौशल राज की आईडी, चौशल राज की। मुन्ना निकाल के मजा आता है आपका। अब नहीं खेलता, बस टाइम नहीं है। ओके, कितना पिटी था? हाय पीयूष, हेलो वेलकम। अरे पिंग वाला मेरा मैसेज पढ़ने कौन बोला? आपकी तो फिक्स है फुरीना। हाँ कॉली और मेरा बर्थडे सेम डे आता है, पता है? इवन आई हैवंट प्लेड GTA। अच्छा नहीं जा रहे क्या सर्वर में? बिजी पढ़ाई करो यार, IITN हो तुम तो। वापस देखो जरा कितना पिटते था। 1 2 3 4 5 6 7 35 36 36 46। नहीं तुम नहीं आ रहे इसलिए नहीं जा रहा। ओ मेरे को इधर से भी बैन पड़ने वाला है, सुना? WFS बुलाया मेरे को, शायद बैन पड़ना। आई नीड क्रूली, चमाट मारूंगी ना मैं खींच के, मेरा दिल तोड़ते फिर बोलते तुम नहीं आती। कौन है IITN? TIG IITN है। 4 पुल करती है, डिजर्विंग। ऑफिस वेन मतलब कल जा रही है ऑफिस में।
कल दिवाली सेलिब्रेशन है तो कल ऑफिस जाऊंगी मैं। बट यार मेरे पास मैंने कपड़े ही नहीं लिए कुछ ऐसे ट्रेडिशनल पहनने के लिए। और मैं सुबह कैसे उठूंगी यार। There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to. ये सब छोड़ के स्टीम बर्ड में काम कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। कुर्ती ले लो अच्छी सी दिवाली पे। अरे मतलब जाना तो सुबह है ना, कल 11 बजे पहुँचना है। हो गया कितना पेटी हो गया 4650। नाइस मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ। गोल्ड देखना अच्छा लगता है यार। यार मैं तो सोची आज मोना दिलवाऊंगी बट ये तो कंफर्म नहीं निकला है। लायंस रोर मिला है, क्या बात है, क्या बात है। 60 ओह शार्लेट मिली, वाओ ओके। ये फोटो खींच के मारती है ना सबको। मेन आईडी पासवर्ड बदल रहा, मैं आईडी पासवर्ड बदल रहा। अरे मजाक कर रही हूँ, आईडी पासवर्ड मत बदलो। आरी4 रीमेक खेलो। अरे वो मेरा और चौशल राज का प्लानिंग अलग। स्प्लैश आर्ट देखो इसका। अच्छा बात है, अच्छा बात है। फुरीना आ गई। बाकी बचे 16 विशेष कर दूं क्या इसके ऊपर, 17 विशेष इस पे। ये गेम मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मेरे को फील आ रही 50-50 विन के। स्टाफ ऑफ होमा निकला है लास्ट आपका। इस बाइजू पे आपका बाइजू चाहिए। वेपन निकालो ना, वेपन क्या दोगे, वेपन टट्टी है या बट क्रिट डैमेज वाला वेपन है। ड्रिप मार्केटिंग नहीं समझते क्या? आई मीन ड्रिप के साथ मैच करना चाहिए उसका वेपन। मेरा तो हो ही नहीं रहा कनेक्ट, 14 डेज हो गए हैं, क्या बात है। ब्लैक लिस्टेड सर्वर खेल लो और तो क्या बोलूँ मैं। हुई। हेलो मम्मी, काम कर लो भाई, जेएम के हो गया डिनर। प्री फार्म करके रखा हुआ है लड़के ने, पता है। I'm really not accustomed to using a... प्री फार्म करके रखा हुआ है। स्टैंडर्ड वे लेला पे है इसके सारा सामान, लेला पे है इसका सामान सारा। क्या बात है। पूरी तैयारी तैयार कौन की यार, मेरे को तो नहीं मिल पाएगी ये। मैं क्या करूँगी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम जब आएगा इसका बैनर ना, तब आई ट्राई टू गो फॉर हर। वेपन कौन सा, लेला को कौन सा दिया है वेपन आपने? ये दोगे इसको फवोनियस? यार वेपन निकाल लो यार। जस्ट स्टार्टेड नो पिक्सल नाउ। अच्छा इसका बैनर 4.6 में आएगा। अरे कोई बात नहीं, हिटमैन मुझे भी समझ नहीं आता, मैं तो ऐसे खेलती हूँ। यार 5 एनर्जी बहुत चाहिए इसको। चलो बाय 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 बाय, लाइक कर देना स्ट्रीम। वैसे सब लड़कियां अडॉप्ट ही कर लेंगे तुमको भाई, देख लेना।
रियल लाइफ पे भी ना कर ले कोई। मैं अभी फुरीना निकाल के डायरेक्ट आलू सुनने तक सेव। अच्छा तुम हार गए ना, अभी कंफर्म होगा तुम्हारा, निकल जाएगा। 130 विशेस बोले थे ना। पूरी प्री फार्मिंग कर रखी है, पूरा 90 लेवल तक। डोरी आप आ जाते नो पिक्सल तो यार, ऑलरेडी 2 सर्वर है मेरे पास, मैं तीसरा सर्वर खेल के कैसे मेंटेन करूंगी। अरे वेपन निकालो ना, 22 क्या करोगे लेकर। 54 पिटी है, वेलकिन भी आराम से निकल जाएगा। 4.2 में कंटेंट बहुत, अरे इजी पीजी 1 हफ्ते में। डोरी की बहन घोड़ी है। कैरेक्टर्स फुरीना प्रोफाइल। मीकू वैसे ये स्पॉइलर नहीं था जो मैंने बताया, उसके इन्फो में दे रखा है मैंने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैंने नहीं पढ़ा, भूल गई मैं जो तुमने बोला। ये बताओ क्या निकालना है अभी और। चौशल बाइजू इज नॉट गुड। मिसगाइडिंग विशेस को बोलो ना वेपन निकालने को। Benny's adventure chip. बाइजू क्या होता है भाई? बाइजू कुछ नहीं होता है। शार्लेट Oh, what a straight. चलो बाय 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 निक। दूसरा वाला वेपन मिल गया तो क्या करोगे, किसको दोगे? दूसरा वाला वेपन मिल गया तो 30 मिनट्स बस लेवल अप ही हो रहा है। ये गेम में यही होता है, लेवल अप ही करते रहो। सोशल यू हैव अ गुड हीलर और न्यू विल है। बाइजू से ज़्यादा हील मैं कर सकता कौशल। अरे मतलब बाइजू बेकार है यार। अगर वेपन मिल जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम बाइजू आएगा उसको पकड़ा देना, ठीक है? अभी बता रही हूँ, रिस्क ले लो। अभी आपके पास न्यू विलियर, आपको न्यू विलियर नहीं था आपके पास? ओह ही डजंट हैव न्यू विलियर, ही डजंट हैव वॉन्डरर, नीलो, ईटो, चीची, अल्विडो, यूला, बाइशू। किसको पकड़ाओगे बाइजू का वेपन? सांगोनोमिया कोकोमिको। अरे हाँ मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, बाइजू और बेजू का वेपन दोनों यूजलेस हैं। सेव करूंगा, उससे अच्छा नाविया लूंगा, वेपन लूंगा या तो। हाँ एग्जैक्टली लेट्स गो वेपन। Scenery is wonderful. लेट्स गो, we're gonna go for the weapon. Sure. नेक्स्ट वाला कंफर्म हो जाएगा ना, वही तो बात है। सेव करो कौशल। अरे सेव वेव कुछ नहीं होता, मन का वहम है सब यार। वेपन में पेटी बनाओ यार। ड्रैगन्स बेन आया, ज्यादा पुलसा है भी नहीं वैसे तो, यू नो। अरे वो सेव का कह रहा था। अरे सेव वेव कुछ नहीं होता यार। This is not funny anymore. अरे तो वेपन नेक्स्ट में ले लेना, पिटी तो बन रही है, 20 पिटी तो बन रही है। गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? चलो लॉग आउट ही कर देती हूँ, ले लो भाई। मैं फार्म कर दूंगी 10 तुम्हारे।
तुम रोके 10 साल हो गए आपको होमा मिले जेम के, तुम रोके नहीं तब अब करना, तुम रोके नहीं तब अब करना मतलब मैं काम कर दूंगी ये समित। अब वेलकम गिफ्ट कर दूंगी भाई, रो मत यार, हद हो गई। चलो अपना अकाउंट दो, ले लेना वेलकम यार 10 फुल के लिए वैसे भी। वैसे भी जब वेपन बैनर पे करना है नेक्स्ट में पुल, नेक्स्ट पैच में, तो मैंने तो 30 पिटी बना लिया। खैर तेजा की बारी, तेजस्वी आई नहीं तो तेजा की बारी क्या करूँगा, खुशी हो जरा। I don't even have his Instagram. बस 2 लोग और है, स्वप्निल का करना था बट स्वप्निल ने धोखा दे दिया, सो इट जस्ट अनमोल और तेजस्वी, दैट्स ऑल। ओके सैम, या तेजस्वी का इंस्टाग्राम क्या है? मिला मिला। आई विल पुल विश ऑन फरीना राइडन नव्या नहीं था, इतना सारा मेरी आईडी खाली है। स्वप्निल आपको देगा बोला नहीं था, बस बता रहा था 14,000 प्रीमोस है। मैं कौन है स्वप्निल, मैं तो जानती नहीं स्वप्निल को। बाद में आएगा वो, बाद में आएगा, अभी काम कर रहा है मम्मी के साथ। हो अब आपका एक खोलू क्या अनमोल, बताओ या नहीं? आपका 50-50 है, कंफर्म्ड है? बोलो 50-50 है। आपका डिस्कॉर्ड ढूंढना पड़ेगा। पिंड है क्या? यार नवंबर के मंथ में इतनी गर्मी क्यों हो रही है? नहीं मिल रहा मेरे को, अनमोल भेजो, डिस्कॉर्ड पे नहीं मिल रहा। फेरी टेल स्वप्निल के लिए वो मीम बोलो, मी को सांप पाल रखे। हाँ रोज आके बंदा फ्लेक्स कर रहा है, मेरे पास 14,000 हो गए, मेरे पास 11,000 हो गए, मेरे पास ये हो गया वो हो गया। मेरे को नहीं मिल रहा अनमोल आपका। ना 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 ना। ऊपर चला गया लग रहा है। रील्स 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 सारे रील्स हैं। फेरी टेल एनिमे एक पुराना 2008 के अराउंड का शायद, यस 2008 9-10 में बी, मोर लाइक यू नो। नारुतो आया था 2010 में मेरे ख्याल से। डिस्कॉर्ड पे भेज रहा होगे।
चलो बाय, मेरे को विश काम करने चला। बाय 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 शाम, टेक केयर। नहीं देखा, नहीं देखा। अनमोल आने में वाले नहीं है। अनमोल ने अभी जाके ओशिनो को देखा है पहली बार। ही डिडंट वॉच एनिमे। कैथरीन से क्या गप्पे मार रहे थे? सबके पास ये लेना है। अच्छा, ये निकाल लिया पहले ही। ये भी निकाल लिया। मेरा कमीशंस बचे हैं। फिर कौन सा एनिमे देखा है? ओशिनो को इन्होंने पहली बार देखा था, हम लोगों ने बोला था देखने को, तो ओशिनो को देखा है इन्होंने। फिंगर्स क्रॉस 50 पे ले। मैंने आज कंटेंट का एक्ट 2 एंड 3 खत्म कर दिया। एक्ट 2 एंड 3 खत्म भी कर दिया। मिक्की माउस देखा है। किधर जाके पुल कर रहे हैं? अरे बाप, ये सब क्लेम कर लिया करो ना, रेपुटेशन रिवॉर्ड, रेपुटेशन रिवॉर्ड। आपका तो इस पे तो यार AMK ने मेरे से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर लिया। ये देख रहे हो 85, मेरा कुछ 60% हो गया है। मेरा ये पूरा 100% हो गया ये वाला। भाई AMK के अकाउंट में ना 50-60 पुल्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे, एक्सप्लोरेशन से ही निकल जाएंगे सर। मैं तो सब देख रहा है। शोनेन एनिमे देखा है? नहीं, शोनेन मैंने देखा है, अनमोल ने नहीं देखा। किधर जाके पुल करे? यहाँ जाके करूँगा। फाउंटेन एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। मतलब मैंने ग्राउंड सरफेस वाला कर लिया, मैंने पानी वाला नहीं करा अभी तक। चलो इधर पुल करेंगे हम। पिटी कितनी है? 2 3 4 5 6 न्यू वाला है। 630 की पिटी है। लेट्स गो। याओ याओ, मेरे पास याओ याओ नहीं है पता। फरीना लेके आओ क्या? फॉर गुड लक। देख लो, आपकी मर्जी है। अनमोल का ये देखो 3000 स्टार डस्ट जमा कर रखे हैं अनमोल ने। वो फार्मिंग नहीं करते ना, इसलिए। मैं होती तो इन सब पे उड़ा देती। 3000। Something on your mind again? Let's work through it together. न्यू बुले लेके करती हूँ। न्यू बुले अपने ये देख रहे गाइस, इनका अकाउंट देखो, सबसे बेस्ट अकाउंट है। 90 लेवल 90 लेवल, ये 80, ये 90 है, ये 80 तैनारी 60। चलो ठीक है। होता 50 लेवल है। जीन को चलो कोई नहीं करता। आया तो 20 लेवल है। The pleasure is all mine. कैरेक्टर कलेक्टर है। he doesn't like। क्या कहता, बढ़िया दिख रहा है न्यू वाला यार। अगली बार पक्का लूंगी इसको मैं। चुवेंची आया तो वही ना, चुवेंची लेवल पे आया तो है। मेरे से भी अच्छा है। ओराट्रिस मैकेनिक दनलिस हरदिनल। अरे भाई लोग नाचने क्यों लगे हैं? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा।
ये देख रहे हो, ये पानी गिरना ना सिर्फ न्यूबले ही है जिसके अंदर ये ऐसा एनिमेशन है, और किसी भी 5 स्टार में नहीं है आर्कॉन्स के अलावा, सिर्फ आर्कॉन्स में है और न्यूबले में है। आई डोंट नो, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ स्पॉइलर। आई एम ऑफेंडेड ऐसा होता हूँ मैं। हाँ वही ना, ये देखो, ये देखो क्या पकड़ा रखा है, देख रहे हो? यही दे दो कम से कम। I see the value in my own नहीं work, प्लीज डोंट but I मत बोलिए, also रील्स see the देख के meaning in पगला all गया the हूँ। endeavors पता of है the वो ना people of रील्स जो Frontier. बना रहे हैं ना, इस पे वो I नॉन believe I जीआई will प्लेयर्स बना continue रहे to हैं, वो take ट्रेंड this. देख लिया मैंने, सो वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अरे 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 अरे, वापस आओ। पिचकारी, यस पिचकारी। आ जाओ, फादर एंड डॉटर साइड में खड़े हो जाओ मेरे। बल्बासौर, हाँ बल्बासौर का विकसित रूप। मैं तुम लोगों का चैट नहीं पढ़ रही, अविश का तो मैं नहीं पढ़ रही, अनमोल आपका भी नहीं पढ़ रही। आप लोग स्पॉइलर खेल रहे हो। 40 पिटी हो गई ना। अरे वेपन पे क्यों कर रही हूँ मैं? ठीक है, लेट्स गो। कॉली May I present? 60। वायराट कोहली। ओके लेट्स गो। 70 पर भी नहीं आई। अब सिंगल पुल करती हूँ। हाय तेजस्वी, हेलो। जेएम के अकाउंट सिंगल। Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would usually? सेवेंटी 74 हो गया ना। Strike a pose. सेवेंटी सिक्स। Melusines are beautiful creatures. They लेट्स are the गो trust of Frontier. 50-50 Be sure to विनर। befriend them. न्यूबी के बाद Cause them फुरीना। no harm. यस, देखो मेरा लकी था ये पहनना, ये टी शर्ट पहनना लकी था मेरा। लेट्स गो। स्ट्रिंगलेस में स्ट्रिंग क्यों है? डैम ये थैंक्स टू मी ऑफ कोर्स। हाँ आए बड़े। रुको, फादर डॉटर डुओ बनाती। किधर गई? वैसे फायदा तो है नहीं कुछ, बिल्ड तो करना नहीं है आपको। पूरा हाइड्रो टीम बनी है ना। येलन हो गई आपके पास, न्यूबी हो गया, ये हो गया। Water comes Ayato in ho many gaya. flavors to the You have discerning like all eye. hydro team. Mondstadt's water. Shower me with praise. Ah, हट, आपका मोना टी शर्ट है। strike a pose.
मैं बस किट के लिए पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज AFK किट लाइक नाहिदा एंड मिको इज बेस्ट गेम प्ले. हाय सुशांत, हाउ आर यू? डज दिस मीन वैसे फरीना का टीम काउंट क्या है? आप किसको नेक्स्ट निकालोगे? नेक्स्ट किसको निकालोगे? नेक्स्ट मतलब कोई भी अच्छा कैरेक्टर नहीं आ रहा. आयातो आ रहा है, सीनो आ रहा है, अभी बाइजू है, तो मतलब कोई काम का नहीं है 3 महीने तक, 2 महीने तक. डज दिस मीन मेरी बारी? हाँ तुम्हारी बारी है. वेपन निकाल ला. वेपन अच्छा नहीं, आपको तो फार्म ही नहीं करना. ठीक है. फ्लोरिन अगले साल आएगी. फ्लोरिन अगले साल आएगी दीदी. मेरा तो कंफर्म भी नहीं है कि आएगा या नहीं. हाँ तो इसका भी नहीं है ना. अनमोल का भी तो 50-50 था. अनमोल का भी 50-50 था. अनमोल को अब अनमोल ने लास्ट टाइम न्यूवी निकाली थी. मैंने निकाली थी क्या न्यूवी? और अभी फरीना मतलब वो जीत गए. मतलब गेंदा फोन. आइए नीचे साइड में. नीचे साइड किधर? $51 विश है ओनली. नो आई मीन पिटी रीच नहीं होगा. 51 विश है. देखते हैं देख लेते हैं. अरे आज निकालो. आज 50-50 विन रेट ज़्यादा है. कल नहीं मिलेगा. फरीना वॉक्स एंड वाटर ट्राई करो. हाँ यस शी वॉक. ऐसी नॉर्मली अभी तैर क्यों रही है? ई दबा के. कैसे वॉक कैसे करती है? कौशल को देखो. यू इन सुमेरु वाटर मैडम. कहा कौशल नाच तो रहा है मेरे सामने. ओ पानी में जाके. अच्छा सुमेरु वाटर नहीं है. मोड चेंज करके होता है. ये अभी डूब जाएगी ना ये ई खत्म होते ही. ओह शी डजंट लाइक. अच्छा ये देखो इसके 3. मीको की नकली फरीना. हाँ अभी बताओ अभी किसका करना है? आईडी पास भेज दो तेजस्वी. ये इसके स्पॉन्स अपने आप अटैक करने लग जाते हैं आसपास जो भी है. Be sanctified. दूसरे वाले मोड से हील होता है ना. इससे हील हो रहा है. सही है. पता दोनों का कॉम्बो है. डीपीएस बना दो न्यूवी को और इसको फरीना लेके अपना करो. भेज दिया. अबूताब के साथ फरीना रख लेंगे. एनिमीज के साथ एचपी बैटल भी कर लेंगे.
मेरे को आने में लगो सर है। अरे टेस्ट कर रही थी यार मैं। आइए इधर, एक मिनट, किधर है? हाँ बोलो। ये कहाँ पहुंचा दिया मेरे को? इधर आके पुल करो क्या? How brilliant! नीचे आना था। पुदीना, पुदीना नहीं फुरीना। बोलो। Showering you with praise! ये बेब्लेड बना दिया है। बेब्लेड बना दिया है। भाई भाई बस बस, बहुत पानी देख लिया। शक्तिमान वाइब्स। आई एम एफ के 5 मिनट के लिए आईडी पास भेज दिया है। चलो बाइजू निकालना है आपको? बाइजू वैसे नेक्स्ट पैच में 30 कितना 32 पुल्स, 32 से ज़्यादा पुल्स है आपके पास, 40 पुल्स है ऑलमोस्ट। अगर ये शॉप से लेते हो ये चीज़ तो कितना पड़ेगा? 11 पुल्स ही है। 11 पुल्स 40, 41, 42, 42 पुल्स है। नहीं सेम को C1 फुरीना हो जाएगी। हाँ ना, अरे नहीं नहीं, इनको ना कैरेक्टर कलेक्ट करते हैं बस। इट डजंट लाइक प्ले और बिल्ड और समथिंग लाइक दैट। ये देखो ना कैरेक्टर सारे लेवल 40 है ये। खाली एक ये बिल्ड है इनके, और कोई कैरेक्टर बिल्ड नहीं है। होता हो वगैरह, येलन वगैरह कोई बिल्ड नहीं है। एएम के देख लो, मेरे बाइजू लेने का मन हो। अनमोल डेफिनेटली अ गुड एडिशन टू नाइडा मिको काजुआ टीम। वो क्लोरिन के लिए सेव कर रहे हैं, क्लोरिन जो अगले साल आएगी। उससे पहले मैं 4 कैरेक्टर निकाल लूँगी। येलन भी ठीक बिल्ड है। अच्छा अच्छा, आपने किया था क्या? Silence! चार्ज अटैक बहुत स्लो है इसका। क्लोरिन ओपी शी रिप्लेसेस राइडन। नहीं नहीं, कोई प्रजीत नहीं है। आपकी पुरीना भी 50-50 है मेरे को। तो मैं तो सिंगल सिंगल पुल करने वाली हूँ ना। मेरे तो न्यू प्ले पे हार गई थी मैं, तो मेरा रियो कंफर्म था। तो अभी मेरा तो पिटी भी रीच नहीं कर पाऊंगी मैं। ई दबा के चार्ज अटैक इंस्टेंट होता है। Settle down! ई स्किल मार के चार्ज अटैक करना होता है नहीं को। Bow your head. एनिमी के सामने ही करके न्यू पे जब और कलेक्ट करोगे के तो चार्ज टाइम कम हो जाएगा। मुझे क्या, मेरे पास तो है ही नहीं। चलो लॉग आउट कर देती हूँ। तेजस्वी का लॉगिन करना है।
नो प्रजीत, नो प्रजीत ही है। प्रजीत भी है क्या दीदी? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रजीत नहीं है भाई। क्या है ये, तुम बताओ तो, ये प्रजीत प्रजीत कौन है ये प्रजीत? रोज आके लिखते हो सर्वेश आप। अरे कोई नहीं, चिल्ला अनमोल चिल्ला। 51 पुल्स है। एंड मैं बता रही हूँ इस बंदे का, इसने ना शुरू शुरू में खेलना स्टार्ट किया था तो अच्छा इसने कॉम्स भी नहीं करे। एनीवे सो ये जो लड़का है तेजस्वी वालो प्लेयर था और उसने खेलना स्टार्ट किया था और इसके अकाउंट पे सारे पुल्स मैंने ही किए थे एंड ही हैज़ नेवर लॉस्ट अ 50-50 लिटरली। तुम देखोगे एक भी कैरेक्टर नहीं है इसके पास जो ये 50-50 में हारा हो। मोना मिली है स्टैंडर्ड बैनर पे, ओके तो पहला कैरेक्टर मैंने ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला और ये भी, मतलब 6 50-50 लगातार जीता है ये। मोना स्टैंडर्ड में मिली है, जिसको भी लग रहा है ना मोना है, मोना स्टैंडर्ड बैनर पे मिली थी। 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स 50-50 है, जीता है। सो लेट्स सी आज Once there was a glorious king. आज देखते हैं पहला 50-50 हारता है या नहीं। होपफुली नॉट, बट देखते हैं। मुझे डिज़ाइन देख के लगा, देखना पड़ेगा। नोट कराया दो आई कैन श्योर। एलिमेंट बता दूंगा तो एलिमेंट उसका किसका पूछ रहे हो? क्लोरिन का ना, क्लोरिन तो अपना वो है ना, इलेक्ट्रो है। बताओ फिर तेजस्वी भाई कैसी बफर चाहिए, सॉर्ड वाली या कैटलिस्ट वाली? कैटलिस्ट मत बोलो यार। तो अभी देखो, अभी तो ये वहां तक पहुंचा भी नहीं है। फाउंटेन पहुंचा तक नहीं है अभी तक, तो ये अभी अभी स्टार्ट किया लग रहा है पूरा। सुमेरु स्टार्ट किया है बंदे ने। सॉर्ड वाली चाहिए ना, हाँ। सो ये भी कुछ खास कंप्लीट किया नहीं है, 38% 74%। सो फाउंटेन खोला तक नहीं है। चलो फाउंटेन में कैसे विश करेंगे, तुमने वहां तक खोला ही नहीं, हम पहुंचेंगे कैसे वहां तक? हम इधर उधर ही कहीं विश करना पड़ेगा, किधर विश करें हम? अभी आरा नारा भी नहीं खुला है। क्लोरिन डेंड्रो वाले अनारकली है, डेंड्रो वाले अनारकली बोला ना, मैं बैन दे दूंगी। स्वप्न बता रही हूँ रैडन के घर पे, रैडन के घर पे फिर से वी हैव ऑलरेडी पुल्ड रैडन के घर पे कितनी बार। रैडन की गोदी में बैठ कर लकी प्लेस दैट इज। स्वप्न शी इज इलेक्ट्रो, हाँ एवरीवन नोज इलेक्ट्रो है वो तो, उसका वो आ ही गया था। चलो भाई रैडन की गोदी में बैठ के पुल करेंगे। बैन दे दोगे रैडन के घर पे? पिटी कितनी है? 0। 1 साल बाद लॉगिन किया है तो 0 पिटी है। मे बी वेंटी के हाथ पे, कस मेरे को गेंशिन नॉस्टैल्जिया बहुत हो रहा है 3-4 दिन से। चलो मैं चला सोने, सुबह 7 बजे उठना है। विश तो देख के जाओ, ये पुलिंग तो देख के जाओ। क्लोरिन दे जियो अनार करें हैं जी। जीरो पिटी, 0। वैसे भी मेरे को भी थोड़ा जल्दी जाना है। ओके सो थैंक यू। हाँ हाँ क्या बात है, 3 कॉल ही ऐसी मिल गई।
2030 फिर शायद हिट ना हो। येप आई हैव नाविया मेन DPS हो। छाता लेके मारेगी। बेडो मेरे को वैसे एल्बीडो 6 पिटी पे मिला था जस्ट सेइंग। आई नो मैंने ही पुल किया था। मैंने क्या पुल किया था इसका पहले क्या निकाला था मैंने एल्बीडो के साथ कौन आया था जो भी कैरेक्टर आया था वो 50-50 था वो पुल किया था। फिर मैंने कहा चलो मज़े मज़े में दूसरे कैरेक्टर भी पुल कर देते हैं। फिर 6 पुल्स में दूसरा 50-50 भी जीत गया है सेम बैनर में। हाँ नीलो निकाली थी मैंने कहा नीलो निकाल दी 50-50। अब चलो ऐसे मज़े मज़े में दूसरा कैरेक्टर पुल करता है 50-50 कंफर्म बना देता है। तो फिर वो भी मिल गया था दोनों मिल गया था। अरे नहीं राइडिंग शायद जो भी था मतलब 6 पिटी में मिले थे। वैसे दो 4 स्टार मिल रहे हैं पता है देखा तुमने? कितना 51? पिटी हिट नहीं होगी मुझे भी लग रहा है तुम्हारी। मैंने जॉन्गली भी 30 में निकाला था पहले जीन निकले फिर जॉन्गली। ये तो सोचो इसका 50-50 था मैंने पुल किया था इसका 50-50 था 50-50 मैंने एक जितवा दिया। उसके बाद फिर 6 पुल्स में एक और 50-50 जितवा दिया मैंने मतलब लगातार 3 50-50। इसमें हारे नहीं अभी तक इसका अकाउंट है वैसे तो लकी अकाउंट रहा है। स्टार ग्लिटर अरे Oh my god. 7th 50-50 win. 7th 50-50 win in a row. 55 पिटी पे फरीना। तेजस्वी ओ भाई रिकॉर्ड बन गया अब तो यार। मस्त है यार मस्त मजे आ गए नो। आज सबको फुनीना मिलेगी। मीकू जाके लॉटरी का टिकट ले लो हमें तो मिला नहीं। क्या बात है अर्ली अनमोल अभी क्या दिलाया मैंने आपको? आसास मत करो समझे अभी तो फुरीना दिलवाई है फिर मोना दिलवा देते रो रहे हो बताओ यार। लोग पता खुश नहीं है स्वप्न देख रहे हो तुम दूसरे स्ट्रीमर को जाके देखो चीची दिलवाते जाके। ये भी चाहिए क्या बाइजू भी चाहिए तुम्हें? ड्रामा था अस कर रहे हो अभी 50-50 जीता है अभी 50-50 जीता और अस कर रहे हो। यस बाइजू कर दो जितना बचा है सारे को। इट्स कॉल्ड एम्पैथी नहीं फोगोनियस। तेजस्वी का सही है पता है बिना ज्यादा गेम खेले बंदे का आराम से वो हो गया है क्या बोलता है कलेक्शन इतना अच्छा बन गया है अच्छे कैरेक्टर्स का। एंड ही हैज बेयरली प्लेड द गेम। आई मीन कितना फायदेमंद होता है ना अर्ली निकालना और 50-50 सारे जीतना। तुमने जो 80 जमा कर रहे हैं 50-50 जीत जाओ तो कितना बढ़िया है। मैं ज़्यादा नहीं खेला इस गेम में केव्स में यहाँ पे ओके इसलिए गेम केव्स में यहाँ पे। खेलता नहीं इसलिए जितवा रहे ये कैसा लॉजिक है यार। सब पे काम नहीं करता वैसे तो मैंने एक्रोनिक्स का भी जितवाया है बहुत सारे।
आई थिंक राइडन की गोदी इज लकी यार, सारे पुल्स मैंने इधर ही करे हैं। हाय डीमन, हेलो, कैसे हो? अभी तो बचा नहीं तुम्हारा, 128 है। ये सब क्या है? ये सब मुझे क्यों नहीं मिलता? क्या बात है, ये ना दूसरी बार दिख रहा है मेरे को। ये शायद ना लॉन्ग टाइम प्लेयर को ये सब मिलता है, लाइक बहुत दिनों बाद आ रहे हो तो। अभी तुम ना ये खत्म कर देना पूरा। सब रह रहा है, सब, इतने सारे प्रीमोजेम्स, भर भर के प्रीमोजेम्स हैं। मैं ठीक हूँ, बस बोर हो रहा था। आई नो राइडन, बेस्ट, थैंक यू। अर्ली अकाउंट में आपका जीत जाता था, बट अब AR60 हो गया तो आपका लूज हो रहा है। थिंक अबाउट इट। हाँ वही ना, वही ना, वही तो। अर्ली अकाउंट तो नहीं, मतलब मैं AR55 तक पहुंच गई थी, तब तक जीत रही थी। अभी रिसेंटली हारना चालू हुई हूँ, है ना। चलो एक और पुल मिल गया। Was studying and just got up. कितना सिलेबस कर लिया तुमने? AR55 भी अर्ली है। हेलो बाय, टुमारो मैच 6 AM को। गुड लक HyperX जीत कर आना। कलेक्शन देखे जरा इनका। 1 2 3 4 मोना स्टैंडर्ड वाली, नीलो, मैथ्स का और 5 चैप्टर बचा है। ओह ओके। वेपन वगैरह तो कुछ होगा नहीं ना तुम्हारे पास देने के लिए? पबोनियस ही पकड़ा देना, और क्या करोगे। चलो क्वेस्ट स्टार्ट करें अब। आर्कन क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेवल अप करने से कमीशंस का ये नहीं मिलता ना, एक्सप्लोरेशन ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट बैनर में कौन कौन आ रहा है? नेक्स्ट बैनर में कौन आ रहा है? आयातो आ रहा है, सीनो आ रहा है। इतना कुछ काम का बैनर नहीं है। और किसी को पुल करवाना है क्या? फ्री में मिल रही है तो बता दो, नहीं तो मैं फिर क्वेस्ट स्टार्ट करूँ। ये राइडन की गोद तो बहुत ही लकी है। हाँ सारे पुल्स मैंने इधर ही करे हैं। सीनो आया तो मतलब मेरे काम का तो नहीं है। सीनो आया तो आयातो का वेपन निकालो या ना निकालो, उसका भी कंफ्यूजन है मुझे। 3 फुरीना दिलवाई आज स्ट्रीम पे, गुड। हाँ उसमें से 2 50-50। आप ट्राई करो। है ही नहीं ना, पुल्स ही नहीं है ना। मैंने न्यूविलेट निकाला, न्यूविलेट कह रही हूँ, मैंने रियो निकाला ना, पुल्स ही तो नहीं है। अगर वो नहीं निकालती तो मिल जाती। आयातो का वेपन अच्छा है, फरीना के लिए भी अच्छा है। नहीं मुझे आयातो का वेपन आयातो को देना है। अब सिर्फ वेपन बैनर में पुल करना है, पता है मेरे को। मैं बताती हूँ, देखो सुनो। अभी 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 फरीना पे मेरा 50-50 चल रहा है, तो सिंगल सिंगल यार रिजली तो चाहिए था मेरे को। डीओसी वाला है तो मेरे को तो वो चाहिए था, ठीक है। रिजली वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट जेलस कि लाइक मेरे को फरीना नहीं मिली या कुछ ऐसा। आई एम ओके, आई प्लान दिस थिंग एंड आई अभी भी 2-3 पुल्स है, बट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड हिम, क्योंकि मेरे को ना क्रायो कैरेक्टर चाहिए।
मेरे पास ऑलरेडी हाइड्रो के नाम पे कोकोमी है जो टीम में रहती है, और दूसरे हाइड्रो के नाम पे मेरे पास आयातो है हु इज़ अ वेरी गुड डीपीएस। सो मेरे को न्यू बुलेट की ज़रूरत नहीं थी, और मेरे को ना फुरीना की ज़रूरत। वो फुरीना मैं सिर्फ लूँगी क्योंकि मेरे को कलेक्शन बनाना है। आर्कॉन कलेक्शन है ना मेरे पास, सारे आर्कॉन्स हैं। I have all the Archons, so I just want to make an Archon collection. Ayaka best का यार, Ayaka I know she is good, but Rio is hot man, come on. Rio is hot. क्या ग्राइंड किया है ना पता है सुबह जग जग कर मैंने इसके पोल्स निकालने के लिए। तुमने जो भी बोला मुझे समझ नहीं आया, बट सुन के अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, इस कैरेक्टर का डिज़ाइन अच्छा है? इस कैरेक्टर का डिज़ाइन अच्छा है या फिर इस कैरेक्टर का? आई मीन ही इज मोर लाइक अ डैड मटेरियल, आई एम नॉट इनटू डैड्स। ही इज गुड लुकिंग। अब मैं हार गई, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो हार ही गई ना 50-50। हार गई तो अब क्या ही बोल सकते हैं। अनमोल बॉय, तुम स्किल के हिसाब से बता रहे हो बीक्यू के लिए कैरेक्टर हॉट है। ही इज ओल्ड, हाँ आई नो। हाय आर्यन, हेलो। न्यू डिजाइन ओपी यार। रियो लिटरली इतना सही दिखता है। 500-600 साल, शायद 500-600 साल पुराना है वो। कहाँ गया रियो? हाँ मैं कह रही थी मेरे पास ना क्रायो के नाम पे बस आयाका एक सिंगल कैरेक्टर है ना। मैं आयाका पे हारी थी एक बार, फिर मैं गानी पे भी एक बार हारी 50-50, और फिर मेरे को चीची मिली है पहली क्रायो कैरेक्टर। सो मेरे पास ना कोई भी क्रायो नहीं था, सो आई वांटेड क्रायो। और हाइड्रो है मेरे पास, 2 अच्छे हाइड्रो कैरेक्टर्स हैं, कोकोमी और आयातो, और वेरी गुड एंड बिल्ट भी है। बी राइट बैक, कुछ टाइम है। ओके ओके। हाँ बताओ तुम्हें कौन सा AR60 आता है? डोंट नीड एनी कैरेक्टर, उसके बाद जो अच्छे लगे वो लेना चाहिए, इवन इफ द वर्स्ट कैरेक्टर। कोई बात नहीं, वाइन जितनी एज जितनी ज़्यादा मेच्योर होती है सुपीरियर होती है। मेरे पास क्रायो में सिर्फ KI है, मेरे को आयाका चाहिए। वही ना, वही। You got a side job for me? Sure thing. ला 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 ला। What's that? सारे मेल Join you कैरेक्टर for a लेके walk? घूमूंगी मैं। Why not? How long will this require exactly? What shall we do? चलो, तुम वाइफूस कलेक्ट कर सकते हो तुम लोंडे लोग, और मैं हस्बैंड्स कलेक्ट नहीं कर सकती। मीनवाइल मी विद आयाका गार्निशन है। एग्जैक्टली। आयाका भी कितनी रो के आई थी, याद है तुमको? कितनी मुश्किल से आई थी। कोकोमी जल परी। चौशल बाइजू लो, बाइजू। तुम देख रहे हो इसका जो डिजाइन है रियो का, उसकी टांगे लाइक आर एक्चुअली रियली ब्रॉड कंपेयर टू अल्हाइथम। he's like what 6'4" or something. Last anime game I played was Pokemon. तुमने ये भी खेला था? Furina, she's so pretty. Yes, yes, she is. Compare his legs and his muscles to other guys. आयातो को देख लो, स्किनी बॉय। वेलकम वेलकम तेजस्वी। अब क्लोरिन के लिए कलेक्ट करना, क्लोरिन नाविया जो भी तुमको पसंद आई उसके लिए कलेक्ट करना। रियो का डिजाइन इज एक्चुअली मैनली, बाकी सबका लगता है खाना नहीं मिला। यार आई एम वेरी डिससैटिस्फाइड। बाकी सबका समझ आता है मेरे को, चलो ये नोबल है एंड ऑल दैट। ये इतना पतला क्यों बनाया है, इसके बाइसेप्स क्यों नहीं है, ये मुझे समझ नहीं है। इसके नूडल आर्म्स क्यों हैं? He's like a Oni and he works outside and everything. Half demon है, Oni है, तो इसका डिजाइन ऐसा क्यों है? इसको बफ बनाना चाहिए था। So Rio I think is the first male character जिसको इन्होंने बॉडी दी है अच्छी खासी। फीमेल कैरेक्टर्स के बुआ पे ध्यान देते हैं ये लोग ज़्यादा,
बट नॉट द मेल कैरेक्टर. सो पहला कैरेक्टर है मेल कैरेक्टर जिसकी डिज़ाइन पे उन्होंने ध्यान दिया है. खैर, आई हैव न्यू विलेज सो आई डोंट नीड हीलर फॉर फुरीना. आई हैव न्यू विलेज सो आई डोंट नीड हीलर फॉर फुरीना. आई हैव न्यू विलेज सो आई डोंट नीड हीलर फॉर फुरीना. क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया मेरे को. अलेतिम के बाइसेप्स देखना. अलेतिम के बाइसेप्स कंपैरेटिवली कम है. हाँ, कंपैरेटिवली. इसके आर्म्स देखो और इसके आर्म्स देखो. लंबा भी है और क्लोरन का बटन भी ध्यान दिया है बहुत ज़्यादा. हाँ वही ना, ओनी मीन्स डीमन. तो ओनी चान ब्रदर कैसे? ओनी ONI होता है, ओनी ब्रदर वाला ओनी. ठीक है, और ONI का मतलब डीमन होता है. हम लकड़ों के लेग्स नहीं देखते. अच्छा, लकड़ों के लेग्स नहीं देखते. कौशल नोटी. बाइजू तो लूंगा ही. फुरीना के लिए बाइजू इज बेस्ट हीलर. ऑल्सो डेंड्रो. फुरीना के लिए बाइजू इज बेस्ट हीलर. फुरीना खुद हीलर नहीं है. फुरीना के लिए हीलर क्यों चाहिए तुम्हें? एनीवे, मैं जा रही थी कहाँ, क्या करने? आर्कन क्वेस्ट करने. कंटिन्यू. वो सब ठीक है, निकाल तो लिया, बट मेरे को आर्कन क्वेस्ट करने के लिए वंडरर बच्चा Are चाहिए. you sure it has to be me? बच्चा चाहिए ट्रैवलिंग पर्पस के लिए. बहुत लाइक इट्स एक्चुअली रियली नाइस. अरे वो पानी का कद्दू तोड़ो चेस में. आई नो. बाद में करूँगी, बाद में. इसलिए तो मैंने कहा आई एम न्यू विलेज सो आई डोंट नीड हीलर फॉर फरीना. लकड़ों के लेग्स नहीं देखता, बस लकड़ियों के. नहीं समझ आया मेरे को गुंजन अभी भी. फरीना को हीलर की जरूरत है. आई थॉट फरीना खुद हीलर है, सब DPS है. Too slow. There's a group of people over there. Let's go listen in. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? या तो Why'd you हील come करते over हैं all of a डैमेज sudden? देते, दोनों एक साथ नहीं करते. न्यूवी हील हो जाएगा बट फरीना को कौन करेगा? कौशल तुम लेग्स नहीं कुछ और भी देखते हो. लकड़ी. The fuck? मैं चैट नहीं Sorry पढ़ी. for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. 4.3 में कौन कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं? नाविया आ रही है क्या कौशल? 4.3 में कुछ पता है? You hear that, Quisto? What nice! Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also Navia, caused Lido, quite the Raiden, kerfuffle. कोई नहीं चाहिए मेरे को इनमें से. राइडन है, ओनी है. नाविया में इतना इंटरेस्ट नहीं है. अल्बीडो नहीं चाहिए. राइडन और ओनी के वेपन के लिए जाऊंगी मैं. मतलब वेपन बैनर पे ही करना है अब तो फरीना के बाद. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, और people with उसके a good नेक्स्ट बात attitude कौन can आएगा? join our मतलब group क्लोरीन कब anytime. आएगी? कुछ आइडिया है Unlike क्या? some of the others here. Your group?
मतलब 40 डेज प्लस 40 डेज, मतलब फरवरी मार्च में आएगी ऐसा, मार्च अप्रैल में आएगी ना। I'm Quisto and this is Lavaroon. People Quito की usually जगह call us आया the का आएगी। bombshell bros, but don't worry. We're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive and we blow minds on the regular. हाँ वही ना, मार्च अप्रैल में आएगी, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। So, you अनमोल two 4 really महीने like तक सेव to करेंगे gossip? उसके लिए। You sure know how to embellish. ये ऑलरेडी आज 30 पुल्स बचे थे ना अनमोल के शायद। No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Right. That meal we had yesterday was super delicious. वैसे Hannah फरीना can का still बफ taste है, it अभी whenever काम she करेगा तो closes बहुत her रहता है, eyes. उसको डिक्रीजेस इंक्रीजेस होता है। जीन बेस्ट ऑप्शन। अरे तो कोकोमी ले लो ना, कोकोमी रखो टीम में, इजी पीजी। कोकोमी किस काम की है, कितनी बढ़िया हील करती है। Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Oh, so you're the one who made those delicious... You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. But enough about स्वप्निल that. तुम क्या कर रहे हो गेम में? स्वप्निल का कैरेक्टर कहाँ से आ गया? कोकोमी अच्छी, बट फरीना साथ खेलोगे तो प्रॉब्लम समझ पाओगे। क्या दिक्कत आएगी फरीना और कोकोमी की टीम में? टीम कॉम्प सही नहीं है। ऑल कैरेक्टर हील पे बफ बढ़ता है। जीन और कैरेक्टर हीलर है, कोको सिंगल कैरेक्टर हीलर है। आए बैगन प्लीज कौशल, तुमने जो कहा वही आए। मेरे को राइडन और नाविया लेनी है। वो गोरा है, मैं काला। उसे कुछ नहीं होता है, ये तुम हो। Since you अम्मा like my cooking, आई I कुकिंग। guess that means we share similar tastes. Listen carefully. Do you know This how to little make steak, bombshell Swapnil? will help you learn what's really going on here in the fortress. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows Risley. more than you think. राइजली And if बोला। he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks. Even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Hi, Miko. Is it normal for Hello. anyone to be going in and Mitsuri out of there को so बोली है ये often? Mitsuri? If you ask me, he's just faking it अच्छा to मित्सुरी get out डीपी of लगा work. रखी है क्या? But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. अभी जो तुम क्वेश्चन कर रही हो वो मैं कल स्टार्ट करूँगा। चलो अभी बैठ के देख लो, कल स्किप कर देना अपना। अम्मा कुकी मियाँ ये क्या फ़ोटो लगा के आई है पोती, वापस वही फ़ोटो लगाओ रे मियाँ, वो बिल्ली वाला। आई वाज़न्ट टॉकिंग अबाउट हर। अभी तो बहुत बाकी है आपका बहुत। I don't care if he करूँगी was ना a करूँगी, researcher तो that 12 could बजे turn हैं। dirt into ढाई mora. बजे Once तक you're in the करूँगी fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. stream। नॉट चेंजिंग प्रोफाइल पे क्लास बार बहुत चेंज करवाई है आपने। 2 में शायद एक्ट खत्म हुआ आपका। हाँ तो नया वाला, अच्छा इस
Speaking Act of which, 4 है ना, Act the 3 तो last खत्म हो time I गया saw ना। him, he was passing by in the corridor with Lord Sorry, V. carelessly blast. I कोई बात also नहीं, कोई heard they बात started नहीं। arguing in the library नीलो and का got बैनर into a कब आएगा fight, वो right? लेनी है, नीलो Guess लेनी। that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow, I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. हाँ ये शायद Act 4 चालू हो गया है। I Act 3 always खत्म see करके her सोई going थी to ना the मैं sick शायद। bay every couple of days देखती too. हूँ। Wait a second. You know, Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? after all, I do remember seeing Lorvine beat Julia to a pulp that one time. हाँ Act 4 है ये। Act 3 लंबा था, आज मैंने किया। हाँ Act 3 में याद नहीं, वो बार बार डॉर्मेट्री में सोने जाती बार बार। That's all that is happening। ये Act 4 है। Act 4 स्टार्ट कर दिया मैंने। Act 4 मजेदार है ना। Quit following me. मम्मा फोर्टनाइट स्टार्ट की रिसेंटली। Hey, you over there? न्यू वाला कब करोगे? अब तो न्यू ट्रांस बॉस भी ऐड हुआ है। करेंगे। Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? TCG खिलवा रही है। You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. BGMI प्लेयर जैसे। एक्ट की बात करो तो मेरा ईयर 40 भी नहीं हुआ Hey, है। come कोई on बात now. नहीं। What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway, यार care to शुरू में join me ना for a game? बहुत अनोइंग रहता है because you don't know how to build character, you don't understand the artifact system। तो शुरू नए वाले प्लेयर्स को जब तक वो हेल्प नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तब अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता खेलने में। तो शुरू के लाइक 50 तक तो तुम कोऑप करके ही खेलो तो मज़ा आता है। TCG टट्टी कार्ड गेम आती बाद में। टेक है ओके क्योंकि ओके। अरे अच्छा तो है TCG यार, मतलब आई एम नॉट गुड एट TCG। बॉट्स को मार लेती हूँ बट देन कोऑप करने जाओ ना और उसमें लड़ो तो आई स्टिल डोंट नो हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर। एग्जैक्टली वो समझ नहीं आएगी तो बोरिंग लगता है गेम। 30 मिनट में रूइन गार्ड मारा था, अभी 3 सेकंड नहीं लगता है। वही मुझे याद है मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी एम्बर से। वो उड़ता हुआ वो फ्लाइंग वाला क्या होता है, वो गोल गोल जो उसमें मिलता है मॉन्स्टर में, एम्बर से मारने की कोशिश कर रही थी मैं, इतना गुस्सा आ रहा था। नो थैंक्स। नहीं, एक बार कंसेप्ट समझ आया ना आर्टिफैक्ट का लेवलिंग अप का, तब इजी है। All right. No pressure. मीकू बॉट किलर इन दिस गेम। हाँ बॉट भी बहुत चालू होते हैं, कभी कभी अच्छे कार्ड्स लेकर आते हैं तो गुस्सा आता है। But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Sure. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. कभी ना हाई लेवल वाले TCG प्लेयर्स को के सामने जाके खेलना। हाई लेवल इन द सेंस जो बॉट्स हैं, और जब तुम एकदम टॉप पे वो कर लोगे उधर जाके TCG खेलना बॉट्स के अगेंस्ट में, पता चलेगा तुम्हें। TCG की बात हो रही है, इस हैक एंड स्लैश की बात नहीं हो रही। कार्ड गेम की बात हो रही है, कार्ड गेम की। आर्टिफैक्ट पे यार 45 के बाद ही ध्यान देना होता है। नहीं शुरू में अगर तुम अच्छे आर्टिफैक्ट लगा लेते हो बेसिक वाले भी, तब लाइक और लेवल अप कर लेते हो। पहले तो मैंने ना 40 तक भी लेवल अप ही नहीं किया था, टैलेंट लेवल अप। आई डिड नॉट पे अटेंशन कि टैलेंट डेवलप करना होता है, तो लाइक थोड़ा स्ट्रगल होता था मारने में। I thought you would have already heard everything by now.
All right then. Did you have anything specific in mind? तुमने प्रीमो जम से Or do निकाले you क्या want me स्वप्न to मुझसे? just pick a topic? कौशिक भाई 3 मिनट लगता है लुल मेरे कैरेक्टर हार्डली टेक्स 5 सेकंड 30 मिनट लिखा था 3 मिनट नहीं पढ़ाई कौन करेगा असाइनमेंट कौन करेगा प्रैक्टिस कौन करेगा रीडिंग कौन करेगा एनिमे कौन देखेगा सीरीज उधर से एनिमे और सीरीज हटा दो तो वो फिट कर सकते हो तुम यू नो एनिमे देखना छोड़ दिया है मैंने सीरीज देखना छोड़ दिया तो मैं गेंशिन खेल लेती हूँ इतना भी वेला थोड़ी ना प्रीमो के लिए इतना करने वाला अच्छा तुमने वहाँ के प्रीमोस नहीं निकाले मैंने निकाल लिए Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. What about relaxing? This game is actually very relaxing for me. जब मेरे को anxiety होती है मैं ये गेम खोल के बैठ जाती हूँ and it relaxes me. So if I'm like chilling or doing something else and I wanna chill, दिमाग शांत करने के लिए I play this game. So मैं खाली नहीं बैठ सकती. If I sit खाली not doing anything, I don't relax. I get anxiety, overthinking होने लग जाती है. So I need to be distracted all the time. All right. Have you heard any strange सोना तो rumors वैसे भी since नहीं you've आता. arrived? अरे मतलब जैसे नींद नहीं आ रही and you're free so instead of watching anime मैंने anime देखना छोड़ दिया ना बोला तो मैंने anime देखना छोड़ दिया है. Then, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Same I play this game like your situation, yes. और like phone पे खेलना होता है ना तो it's like आराम से बेड पे लेट के खेलो वैसे भी ऑन देखते 7 बजे तक मैं रिलैक्स रहता हूँ तो अभ्यास कर लेता हूँ एंजाइटी हो जाती है फिर ना ही आपके खाने का ठिकाना है. Yes, you've already met those two. They're quite a pair. They always keep an eye out for the latest happenings and gossip about everything. I've never seen anyone with more time on their hands. I heard that they used to be a chef and a bartender before they were sent down here. You know how bartenders are, always chatting with customers. And chefs love to pass the time just hanging out when they're not cooking. Good to know. Do you have मैं anything तो लोग else to सेल tell में us? खेलता हूँ मैक्स एफपीएस और मैक्स ग्राफिक्स क्या बात है सही है. Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Meripede before? क्या बात है जेलर भी जेल आया तो मुझे एंजाइटी होती है तो मैं मिको के स्ट्रीम पे जाता हूँ. Huh? Wait, are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though. सपने को सिर्फ आपको स्ट्रेस हो मेरा भी पर्टिकुलर टाइमिंग है स्ट्रेस का पता है मेरे को अर्ली मॉर्निंग होता है मेरे को अर्ली मॉर्निंग हाइव्स होने लग जाते हैं फॉर सम रीजन मुझे इस टाइम नहीं होता प्रॉब्ली बिकॉज उस टाइम कोई नहीं जगह होता है घर में एंड एवरीथिंग इज साइलेंट देयर इज नो वन टू टॉक एंड यू आर अलोन विद योर थॉट्स सो मेरे को लाइक 5 बजे 6 बजे ऐसे टाइम पे एंजाइटी होती है. ग्रीड कौन है? To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie, I kind of respect that. By the way, do you happen to know anything about a forbidden zone? A forbidden zone? सोते Sounds नहीं like होते something that होंगे someone ना तो just made up. मेरे को इस I've never जेल heard में of आके that. एंजाइटी Where did you hear about it? जेल में एंजाइटी वो कुछ होता है वो एरिया कुछ ऐसे होते हैं ना जो तुम्हें पसंद नहीं आते. अच्छा बाय द वे डिड यू गो टू दैट एरिया? नहीं अलार्म लगा के स्ट्रेस नहीं होता बेसिकली अर्ली मॉर्निंग ना तुम अगर गूगल करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. अर्ली मॉर्निंग जो तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल होता है ना सबसे ज़्यादा हाई होता है बॉडी में. स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल जो होता है
सबसे ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में हाई होता है, सो अर्ली मॉर्निंग ही इज़ द टाइम वेयर यू फील वेरी वेरी मच स्ट्रेस। अरे किसी को वर्ल्ड में आने मत देना, सब लोग फुरीना के फूल लेने आए हैं, छोर है सब के सब। तो मेरे पास तो फुरीना है ही नहीं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 3 दिन में फूल वापस आ जाएंगे। 3 दिन में मेरी फुरीना थोड़ी आ जाएगी। कौन सा एरिया? अरे हाँ वो एरिया, वो वाला गए क्या एरिया में तुम चौशल? क्या बोलते हैं उसको? अरे जिसमें वो स्टेयरकेस ऐसा कुछ बना हुआ था। स्ट्रेस स्ट्रेस कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। हाँ सब मन का वहम है। मैं आता हूँ सामान लेने को तो भगा देती है। मैंने कब भगाया? कुछ भी। किसका सामान लेने से भगा दिया मैंने? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think अरे of. वो जो But I'll be sure to tell मेलोजिन you ले anything जाती है interesting एक I hear जगह पे next अलग time. से, You'll have उसके to play a अंदर game वो of Genius Invocation with me first, though. अबे TCG नहीं खेलना मेरे को। Hi, can I join you work for some lilies for my Furina? Sure, go ahead. Oh la la. सही बोला तुमने। फैक्ट नहीं बोलते बेचारा कौशल, सब भगा रहे। अरे कौशलों में एक टाइम पे ऑनलाइन ही नहीं रहते, मेरे को खुद फार्मिंग करनी है। मैं बेचारे रियो के लिए फार्मिंग नहीं कर पा रही है, तो वो सो जाते हैं रात को। मैं कब खेलती हूँ? मैं स्ट्रीम के बाद खेलती हूँ। मैं 4 से लेकर 5, 6, 7 बजे तक खेलती हूँ। ठीक है, प्रीमियम खरीदवा के मानेंगे ये लोग। इतने एड्स आ गए, मैंने तो स्किप वाली एड लगा रखी है बाबा यागा। क्या करना है मेरे को? अरे अनेबल टू इनिशिएट क्वेश्चन कोऑप मोड। अरे बाप रे, क्वेश्चन ही नहीं कर पाऊंगे। Have you ever seen these stickers on my back? Do me a favor and take them off. Now it seems like नया अकाउंट पेमेंट करो अब AR40 और अप वाले बिना आर्कॉन क्वेस्ट कंप्लीट किए सब वीकली बॉसेस खेल सकते हैं। लात मारी है। अरे कैन यू do it fast though? I am live and in middle of fun quest. चलो फूल लेने बाद में आना, क्वेस्ट इम्पोर्टेंट। कोई नहीं करने देते हैं, 2 मिनट रुक जाती हूँ। चौशल आओ जरा मेरे वर्ल्ड में आना, मैं भी अपने रियो के लिए फार्म कर लूँ। वो सब डिटेक्शन यूनिट छोटा सा होता है, ऐसे ना बग टाइप का पकड़ना है। इट्स वेरी हार्ड टू कैच हिम। कितने पकड़ लिए मैंने? 7 पकड़े हैं। मेरे कैरेक्टर्स लप्पू से क्यों हैं? मेरे कैरेक्टर्स तो अच्छे हैं, मुझे क्या। ये देख रहे मेरा कैरेक्टर। हार्ड टू कैच खड़ा रहता है एक जगह। हार्ड टू कैच मतलब दिखा ही नहीं दे रहे, विजिबल नहीं है। देखो मेरे को फार्मिंग की आदत कैसी है, तिनारी और चीची और इन सब से फार्मिंग कर करके मेरे है। ये क्या चलेगा? मम्मा हाँ आपको पड़ी है क्या बेटी की? गैस लाइट कर रही, भगा देगी मम्मा बुला के। देख लो, गैस लाइट कर रही, भगा देगी बुला के। क्या बोल रहे हो? और है क्या?
रिजली एस टीयर से डाउन जाने वाला है। डजंट मैटर, डजंट मैटर। देखो AR60 के बाद ना तुम्हें जो कैरेक्टर पसंद है तुम उससे खेलो, ये वाला सीन हो जाता है। मेटा गेमिंग नहीं होती है, पता है यार। ये टीम कॉम के लिए मुझे ये चाहिए, ये टीम कॉम के लिए मुझे वो चाहिए, जो जो कैरेक्टर चाहिए वो उससे खेलो। ये क्या खुलवा दिया? बाय 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 बाय। कुकी जाओगे तो दूध में डुबो के खा जाऊंगे। फोंटा थ्री पी। फुरीना का फूल कौन सा है वैसे? मेरे को सबसे अच्छा आर्कॉन क्वेस्ट सुमेरु और फाउंटेन का लगा। ऐसा मुझे सबसे अच्छा स्टोरी क्वेस्ट ना शोंगली का लगा, वेरी नाइस था। कहाँ चली गई मैं? इधर है कौशल, मुझे दिख नहीं रहा। ओ यहाँ पर है। चाजम वाली निंगवान और ड्रैगन्स की लड़ाई वाली, फिर राइडन। हाँ चाजम में भी मज़ा आया था। जा कहाँ रहे हैं ये लोग? है जी। सिजवीन आएगी, हाँ हाँ सिजवीन आएगी, क्यों नहीं आएगी। सिजवीन भी हीलर हो गई है ऐसे ना। चलो कोई नहीं, शुड आई लीव इट्स इन gonna continue our quest. Bye. चाजम वाली और निंगवान और ड्रैगन्स की लड़ाई हो रही। तुम बहुत भली इंसान हो। क्यों?
बहुत ज़्यादा मटेरियल फार्म कर अरे मैं उनके जाने का ही वेट कर रही थी ना। अब किधर जाना है? अरे यार गलत लोकेशन क्यों आ रही है? आर्कन क्वेस्ट करना था। क्या है मम्मी? थैंक यू। आओ हल्दी वाली दूध पियो गाइस। लोगों को फार्म करने देते अपने। हाँ मैं करने देती हूँ। मैं बाहर मतलब ये तो फ्रेंड लिस्ट के थे। चलो कोई रैंडम भी आता है तो उसको भी करने देती हूँ। Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? अरे फिर से खेलना पड़ेगा पूरा यार। TCG? Hey, सारा come on skip करना now. पड़ेगा। What's wrong with... all right. But why would you... There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, sure. Great! Since you... I thought you would have already... Why don't you pick? All right. Have you heard any What is that? strange rumors? And did you know that there are... Yes, you've already met those two. I heard that they used to be a chef at... Good to know. Let me think. Oh, did you know that the Duke... Huh? That's right. The Duke was to go from an ordinary inmate, a forbidden zone. It's just a room. Anything else? No TCG खेलना We've पड़ेगा talked to कल। just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. POV Acro doing Archon quest. Acro doing Archon quest मतलब? Acro ने तो छोड़ दिया खेलना बहुत पहले ही। I think 2-3 महीने हो गए लॉगिन किए हुए। Squall Fury. Acro भी skip। अच्छा वो skip। ओके। हाँ समझ गए। Acro doing, Swapnil doing, a lot of people doing Archon quest. Skip. Means you are skipping. हाँ ये क्वेस्ट ऊपर जाओ नीचे जाओ ऊपर जाओ भैंस की क्वेस्ट नहीं है लिफ्ट मैन बना के रखा है। अरे मैं भूल गई आक्रो खेलना भी करता था। ऊपर जाओ नीचे जाओ। Huh? कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है मेरे को। ब्रेड चाहिए। That look in your eyes. You found something? Hey, this is no time to be modest. टेलीपोर्ट Just मारो tell him सब we found लोग a पे। ये boatload of टेलीपोर्ट मार information. के वो जो मुंह पे जो वाइट आता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मैं चल लूंगी बट मुंह पे वो वाइट कलर का फ्लैशबैक नहीं चाहिए मुझे है ना। हम तो उम्मीद में थे As कोई स्ट्रीमर expected of चलेगा the हमें legendary समझाएगा बट duo, भाई मुझे you have my full and undivided समझा तो attention. रही हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? अभी तक क्या समझ नहीं आया बताओ। Huh. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about he is a harbinger after all. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked. His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. खुद चले जाओ ना। Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Bingo! Is he? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. It's the least I can do. We're तीनों भाई all in बहन आए this थे क्या साथ together, में? so it's only मुझे तक fair समझ for us नहीं to आई fulfill मेलोडी our की end of the चॉकलेट क्या है। bargain. Honestly, Chocolate I'm है far भी नहीं more melody, impressed by पता है? you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. राइसली कोई को राइसली बोल रहा है कोई राइसली बोल रहा है। Collecting information has always been our strong point. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Ch, and if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now.
And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. My mom insists me so much about turmeric milk when I have cold, but I don't like it. तो थोड़ा सा डाला करो, ज़्यादा नहीं. Like very very little. My mom puts very little turmeric. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Oh, and there's just one though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts. Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So 3 दिन के लिए अगर यहाँ से गायब हो जाएगा तो the only पता नहीं ones we चलेगा can कि count on. काउंटिंग नहीं होती. What do you want us to do? Will it be hard? लिनी भी हार्बिंजर का मेंबर है. हाँ ये हाउस ऑफ I हार्ट won't से है call ना it ये. easy per se, but I हार्बिंजर का think बेटा. you'll be able to pull it off. Listen carefully. He's You'll not need part to of find the an Harbinger. excuse to He's get not into the that infirmary and special investigate the room and powerful. environs. उसका बेटा है, adopted बेटा. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me, but also there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. No, when it comes to intelligence gathering, I'll believe अब anything कौन आ as रहा long है? as it comes from you. So, please prove... All right. सबको Then we'll चाहिए head out pull as up. soon as we finish our... Let's go our separate ways for now then. Don't forget... हल्दी के साथ प्याज और अदरक भी डालना टेस्टी है. एओ. Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. There seem to be several people inside. Right. I feel like we... It's not impossible. Oh. It's a bit hard to understand them from here. आर्लेचिनो मम्मी डैडी का बेटा है. यस यस यस. Oh. Someone, please help! She's sick! Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion. Could it be poison? Let me take a look. Please lie down over here. Yeah, Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder. By the way, Walk onion soup slowly. पता है, French soup है. Onion and milk से ही बनता है. हाँ तो मेरे को सूप नहीं पीना. बायो पे डाल दो. No entry, 10 rupees 1 full. तुम बना के देगा. कब तक खेलोगे ये बेकार गेम? क्या खेलूं मैं? और कुछ है नहीं खेलने को. You can do it, traveler. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a Valorant. preliminary checkup on you. नहीं किया मैंने. आज आर्गन क्वेस्ट आया तो आज यही करूंगी. अनियल मिल्क सही में नहीं खाना चाहिए. 50 rupees काटो उसका. My checkup has confirmed that she's not in any mortal danger. Eh? Oh, that's good. I'll continue my diagnosis of the Don't sense serious damage to your organs either. But based on my initial checkup... what about here? ये क्या बस छू के पता लगा लेती है? बराबर है. मिल्क वैसे भी खा नहीं सकते, उसको पीते हैं. तुम लोग अपना कर लो. डिसाइड कर लो. By the way, स्वप्निल is a chef ना गुंजन. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious.
teammates complaining about the food recently. Congratulations! The health risk is incredibly low, so you should... Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. And she hopped कब away एक्शन आएगा? कब एक्शन आएगा? इस वाले क्वेस्ट में एक्शन है यानी हाँ या ना बोलना. Hello. So how are you feeling now? Her stomach aches really bad. She was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. But it also looks like she's the only medic you've got down here. Well, that's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone in prison here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sijuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Sorry, I got a bit... Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups, and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for... you could say she fancies herself as Miss Sijuin's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurrier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now! Please, keep it civil at least! झगड़ा कर रहे दोनों. Someday, so there's no need to argue over silly things like this. But Paimon is me in CS:GO match kal. Release. Face so it's sad. way too early for us to even think dead about face that. Dead. And who the... Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurrier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. अरे तो वो लास्ट वाले में था ना ऊपर नीचे वाला. इसमें थोड़ी था. 3 में था. ये 4th है. He just slowly walked off like that? That's just what... I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurrier, but I hope you'll never have cause to remember his name. अभी तक कुछ काम की बात नहीं आई है. 3 एक्ट से कुछ काम की बात नहीं है. पता है? ये इतना सारा conversation पता है एक quest में आ जाता. Who would like someone who is as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? I'll accompany you two for a while. Miss Sish, no. I'm back. Did you rest like you promised? बेड का रेशियो देखो कितना बड़ा है. इतना बड़ा बेड है. तकिया देखो. तकिया इसके साइज का है. यू नो पिलो लुमिन के साइज का है. सो पाइमोन का साइज देखो इतना है. तो 1 पाइमोन 2 पाइमोन 3 4 5 5.5 पाइमोन आ जाएगी बेड पे. पता है सीधा सीधा रखोगे वो भी. Thank you for getting our medicine, Miss Sijuin. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be... Miss Levine, I left in a bit of a hurry just now. मेरे को तो पहले 2 आर्कन को मजा आया था. 5 मजा आया था. 3 the color of the pill that you should be taking? इस वाले आर्कन को ऐसे मेरे को कोई मजा नहीं आया.
वो इंटरेस्टिंग था, क्या बोलते हैं, लिनी का जो था आर्कन क्वेस्ट, मर्डर वाला सीन, और वो कौन सा था जो फाउंटेन वाला जो होता है, मिसिंग वुमेन को जो पकड़ता है ना, वो उसमें मज़ा आया था। वो क्यों कर रहा था, बहुत इमोशनल हो गया था। फिर वो फाउंटेन के अंदर जाता है तो सारी लड़कियों की आत्मा रहती है वहाँ पर एंड उसको डरा देती है। दैट वाज काइंड गुड। बट अभी ये जो 3 एक्ट मैंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। शायद सारे कैदी एक बेड पर ही सोते होंगे। Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon. See ya! Yes, linear disappearing case of Costasum, yes. I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double-check a few details, if that's all right with you. Those two made quite the commotion just Nani. now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So her primary symptoms are abdominal pain, with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, her base माइमन constitution कितनी is quite अच्छी है, good. मम्मी जैसे So डॉक्टर से I'm बात sure नहीं she'll करती recover वैसी है। quite quickly after बच्चा taking नहीं the बता रहा, medicine. मम्मी बता रही है। Please make sure to stick to bland or less stimulating foods. And don't stay up एक्ट too 2 late at में night. मजा आया था। क्लोलिन की एंट्री क्या थी? Got it. Paimon will hold the Traveler. Oh, you're going to take a nap already? We've been to lots of places together. She may look a bit under the weather now, but she's actually super strong. So you're पेट the खराब best होगा। of companions. Well, don't worry, she'll recover soon. Ah, you're awake. एक्चुअली मैं सो गई। How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take the meds regularly. Thank you, Miss Sijuin. आज के नीचे नहीं देखना क्या? क्या था? ना पड़ी थी मैं बेड वैसे तो। अच्छा, सीजून यही खड़ी है। वाह। ये कौन सी जगह है? अच्छा, लेटर भेज सकते हो यहाँ से। Take it and have fun. Behold! Too slow. Squall Fury! रिसेप्शन है जेल का। ये रिसेप्शन नहीं है, लेटर भेजने के Upon the लिए। gale. रिसेप्शन तो वहाँ आगे था। You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, don't take my grilled fish, and put down the Adeptus Temptation now. Paimon talked with Sijuin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you sure we're not going off track with the infirmary? Whoa!
You really are super thorough. Hi, All those Acro. tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. We've got to give the info to Linny. Good luck. Bye bye. You managed to set the business and something passed by investigation, but she does not look at you or even change her expression as the pocket sign for. Writing कैसा है सोल? आज फुरीना कैसा? कूपन्स वगैरह वगैरह बहुत है इसमें. भी फ्रेमिने आएगा? फ्रेमिने नहीं मिला, मुझे बहुत बुरा लगा पता है. फ्रेमिने चाहिए था मेरे को, मैंने कोशिश करी पुल्स करके बट नहीं आया. Let's go meet up with Linny. Do I have pulls? सिंगल पुल करूंगी मैं, सिंगल 5 की पिटी है. फेमिने यूला का छोटा भाई. 2.5 के प्रीमोस है मेरे अकाउंट पे. पुल करवाना है बताओ सोच. 2.5 के प्रीमोस मतलब कितना? 15 पुल. पिटी कितनी है? जमा करो. फुरीना आर्कॉन है बेसिकली ना, हाइड्रो आर्कॉन है. शनहे लेना है तुमको आर्कॉन. Did you two run into any trouble over the past few days? पानी पे चलती है. शनहे तो पुरानी हो गई. Our shifts according to the schedule. That's good. That means you didn't raise any Bye suspicions when you bye. infiltrated Good night, the infirmary. Gunjan. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Paimon hopes everything... Perhaps that's true. You are both very wolf good lady people, और wolf lady and कौन we've come है? to appreciate Wolf that boy more है. than anyone else. Wolf lady Unfortunately, कौन है? there's still one thing that could get between us. You've mentioned before that you've had... Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future, too. Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. Glad to hear it. Then, let's go check on... Is now really a good time? According to my observations, Sijween always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Also, I'm her brother, remember? Okay, then let's hit... वुल्फ लेडी कौन सी है? डिया की बात कर रही हो क्या? ये टाइगर का फॉर लायन है, लाइनस है ये. वुल्फ नहीं है. वुल्फ वाला बताओ कौन आया है? कैंडिस एंड डिया. शी इज बेसिकली अ लायन. आई लुक एट दिस लायन. ये स्नेक मैन है. स्नेक है ये. और ये वुल्फ बॉय है, छोटा सा वुल्फ बॉय. और एक्चुअली में जो वुल्फ वाला कैरेक्टर है ना, इसके ऊपर है. ये है, इसके कान भी है वुल्फ वाले. मगर देखोगे ना, ये देखो इसके कान भी है वुल्फ वाले. सो ही इज़ द वुल्फ बॉय. और इसका कॉन्स्टलेशन भी देखोगे तो वुल्फ है. ये हैंडसम लौंडा बाइजू. इसका नाम रियो रिस्ली है. रियो दसले करके.
बाइशू को ओरोची मारो। बाइशू तो स्नेक हो गया। ये है वुल्फ बॉय, ये देखो ये आया नया कैरेक्टर। ऐसे गले वाले पे स्कार भी है देखो, दोनों साइड, तीनों साइड। एबिलिटी पंच मारता है, आइस पंच। क्रायोना, यस। ये अभी चला गया। अभी ना ये फुरीना आर्कॉन आ रखी है। आर्कॉन हीलर भी है, बफर भी है, पानी पे भी चलती है। तो ये यहाँ की आर्कॉन है और ये बाइशू है। ये बैनर आ रखा है। अभी नेक्स्ट में अयातो आएगा। अयातो और सीनो आ रहा है। तो फुरीना निकाल सकते तो निकाल लो, इसके बाद कोई अच्छे कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं। इसका डेमो दिखाओ ना इफ यू डोंट माइंड। अरे अभी दिखाती हूँ, रुको। ये कट सीन के बाद। Strange. As expected, Sijuin isn't here, but why isn't No, Lynette rarely deviates from the plan. Unless... Let's see if there are any clues around here. We could... Okay. PUBG स्ट्रीम में कर, PUBG मोबाइल या PUBG PC? कौन सा बाबा जाएगा? ये तो उसका डेमो देखना है ना। ये देखो, इसका ना 2 फॉर्म है। तो ये कपड़े चेंज कर लेती है, कपड़े भी चेंज कर लेती है। देखो अभी लंबे बाल हो गए, अभी चार्ज अटैक करते हो थोड़ा सा तो ये 2 फॉर्म चेंज करती है। ये देखो, इसके बाल छोटे हो गए, ब्लैक में हो गई। ये देखो, ये हो गया। इसका कुछ ऐसा है कि एक में वो स्पॉन करती है मारने के लिए और एक में हील करती है। तो 2 फॉर्म्स हो गए इसके, कोई भी है गेस। तो ये देखो, ये हीलिंग वाला है, ये हील करता है। और अगर दूसरे ब्लैक वाले फॉर्म में करूँगी तो ये ऐसा स्पॉन करती है। तो ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये फिर जाके अटैक करते हैं। अल्ट देखो, कुछ जगह देखा है फुरीना के बाद और कुछ कैरेक्टर है जो बात देते हैं उसको नर्व करेंगे, सो फुरीना ही मेन बफर रहे। और राइडन, ये वाटर बबल्स देख रहे हो, स्क्रीन पे भी बबल्स आ जाते हैं। If you're noticing, स्क्रीन पे भी बबल्स हैं। How dare you! May I present? Time to shine. मॉमी राइडन बेस्ट। नहीं यार, पबजी तो नहीं, पबजी पीसी में तो लोग खेलते भी नहीं हैं। वैलो स्टार्ट करना है मेरे को फिर से। अल्ट सीडी लो है। क्रिट डैमेज तो वो बिल्ड थोड़ी है। बबल रिप्रेजेंट बफ इज एक्टिव क्वांटिटी ऑफ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोग समझा देंगे। मैंने खुद नहीं पढ़ा है इसके बारे में। ये सॉफ्टवेयर A quick guide to the psychology of emotions. डीपीएस नहीं है वो है, बफर है, हील करती है ना और बफ देती है, ऐसा है। सो एक तो हाइड्रो एप्लीकेशन हो गया, कूल डाउन। अच्छा हाँ, कूल डाउन करेक्ट नहीं। अच्छा These sure are some interesting books. Who knew Sijuin would be interested? She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because Seems quite normal to me. Catalyst These are नहीं है, skills that sword would come user। in handy for a nurse from time. Catalyst नूवले था।
ये कैटलिस्ट है। Way now. इसका बुक क्यों नहीं दिखा रहा? मैंने इसको वेपन नहीं दिया है क्या? दिया है ना। हाँ तो ये कैटलिस्ट है। None of the beds have any signs of having been slept in. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending CS to to be rank को थोड़ा sick. टॉक्सिसिटी भी चाहिए होता है फन के लिए। हाँ कल खेल तो रही थी मैं। टॉक्सिसिटी She क्या would ही? have said her migraine was मेरे having a टीममेट्स ही आपस में particularly लड़ाई कर bad रहे थे। flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask, which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left अभी the मैं bed, अच्छा खेल रही थी तो इसलिए कोई बज नहीं रहा the था। nurse वरना intentionally usually तो left बजते it हैं। this way. I think नए प्लेयर्स हैं ना, they're like quite nicer. So अभी तक तो मेरे से कोई टॉक्सिस तो हुआ नहीं है। Good thing ना। शांति से अपना अपना ग्राइंड कर रहे थे लोग, मतलब अपना अपना खेल रहे थे। This is it. We saw it before. Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised. अब ये हैच में The जाएगा। space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Let's look around here for some more clues. Hey, you guys, there's a slip of paper. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, "Out of respect for your usual practices, Guys, I'll मैंने घर use a छोड़ दिया piece था। of paper Divas or Rio card उसका चाचा as है, the और medium ने to घर pass वाले on बताना my हमारा message. देखो। अरे You may यार। consider this as me giving you my best regards." This is... Is that all? The back. This... Show me! Now! कहाँ गई? इसकी बहन किडनैप हो गई। That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have? Is she already? Writhsley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? Why would he choose to act We during didn't run the into second any trouble last infiltration time, and attempt he instead also of the never first? reached out to us since. अच्छा, राइसली ने पकड़ लिया। Yes, that is a crucial question. Writhsley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Writhsley. We're a completely different story, though. I'd like to know that, too. Why did he only go after her? Don't panic, just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. इसकी बहनी गायब होती रहती है स्वप्न में पूरा टाइम। Wait, you're right. Wait, the fact that Fremine was able to leave the grounds. Could Writhsley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Writhsley let him leave on purpose, then he's Lenny's getting more and more panicked. We have to calm. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this. Hey, don't be reckless! Traveler, please! I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. भाई की फिक्र नहीं है, सब बहन की फिक्र है इसको। He's rushed out the door! After him! ये चुपचाप सुन रही है बातें। वो स्माइल भी कर रही है। Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Huh?
someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! She's... Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also ये like तो playing evil लिख रही dumb. I like the feeling Genshin वाले of पैसे being बचा रहे हैं, trusted. कैरेक्टर गायब कर देते हैं, स्टोरी बन जाती है, पैसे बच जाते हैं। हाँ सही बोल रहा है, एनिमेशन का खर्चा हो जाएगा गायब करके। Oh my! What's wrong, little one? Being able to read human expressions is quite the useful skill. ये भी हाइड्रो है। Wait! Wait! It's no use. We have to catch up to him. Behold! He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office. Come out and face me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my sibling? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. Rende will be the main DPS, yeah. हाँ probably she has like gun वगैरह electro रहेगी और gun वगैरह यूज करेगी, ऐसा कुछ होगा. लेने को कुछ हुआ तो वर्ल्डचिनो चाइल्ड उठा के पट गई हैं. He's not. What do you really... Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So where do you think he may be right now? Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? वो तो चाय पी रही है, बहन तो चाय पी रही है. To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides,
I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremenet is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. क्या बात है? You want to see Father? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the Fortress of Meripede? This place is basically a no-man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Nestle looks Both like a, and Monsieur he likes Neverlet tea. and Lady Furina have चाय already पसंद है, चाय received के बारे में बात many करने जा रहा samples है. as gifts. I like tea as well. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Linney! Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter... I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5... क्या बात है? Wait, 2... Time's up. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Linney, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neverlet, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found? I'll ask you 3 questions. Answer all of them. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? भूल गई मैं तो. If you break the hidden rule in the production zone, your welfare meal might contain some strange meal. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, we often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seemed... Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta
We often see Miss Sijuin observing the prisoners at... और कहेगा साइलेंस वो ठीक है बट इसमें से कौन सा क्लू सेलेक्ट करना है? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of... We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed... The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company... इसमें से क्या होगा? We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. I've been told that the infirmary is always... The Fanta promoter has been struggling. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work. According to Collins, the Pancration... Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an... According to Collins, the research note said that the Melusine race perceives... Fanta's internal reports... We often see Miss Sijuin observe... The Fanta promoter has been... The Fanta promoter has been... Fanta's internal reports suggest... We often see Miss Sijuin observe... The Fanta promoter has been... We often see Miss Sijuin... The research note said that the... According to Collins, the pancreas... I've been told that the infirmary is always... सब तो इनकरेक्ट बोल दिया इन्होंने फिर करेक्ट क्या है? We often see Miss Sijuin. सब तो मैंने वही तो सेलेक्ट किया था मैंने. So that's what's going on. Paimon understands it now. The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared. But in reality, they were all prepared. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, she's not cute, Sijuin and I'm confused visits as the well. cafeteria right before lunch. And Sijuin has only the best intentions with her surprise gift, and doesn't want... Unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak. Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions. All right, now for my next... There are also some hidden rules in the Pancration ring. I've been told that the infirmary is always empty for... Fanta's internal reports suggest that... We often see Miss Sijuin observing the... The Fanta promoter has been struggling because he doesn't... The research note said that the Melusine rig... According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored it. Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. I've been told that the infirmary is always empty. We often see Miss Sijuin observe... The Fanta promoter has been... The research note said that the Fanta's internal reports... We often see Miss Sijuin observing the prison... Second wala. Fanta's internal reports... The research note said that the Melusine... The Fanta promoter has been struggling... Paimon gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration ring is about how, people are not
not supposed to bet on both boxers at the same time. And people get scared when they see it because but really, it's just a bottle of the latest yet to be named and packaged new Fanta trial product. A blood red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product and so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to... Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words. I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? मैं कभी भी सॉल्व नहीं करता मेरी ओन स्टोरी कहना मजा आता है मेरी ओन स्टोरी कह रहा ऐसा है होता तो मजा आप मुझे लगा आपने ये नहीं किया है Stop your cruel and pointless games, Risley. You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of you'll pay for this. Lenny, are you alright? ये क्या हुआ ये कहाँ से लगी इसको Oh, close one. I owe you, Siegeween. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Siegeween? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Siegeween. Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? But I really am just doing what Monsieur Nervulette told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. मतलब जो आ जाता नहीं नहीं His Grace knows it too. आज वाला इसके बाद होगा. Your Grace? My dear Siegeween, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do What are you talking about? Take me if you want. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. अच्छा आ रहे हैं. Two more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Siegeween, I leave Miss Lynette in your care. You. I believe I hear footsteps. सही में आ गया. क्या Some बात space, है? please. I'm gonna get her. Ah, Miss Clarand. My door. Fremine. उठा के ले आए Fremine को. Fremine. What's going on? What is Clarand doing here? Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... मर गया. A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. क्या बात है? What did you... Please, make some space. I'll need to give Mr. I'll talk to Clarand while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Siegeween may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time... Well,
You can see how that boy's doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Chai pee lo, guys. How is he? Hi there, hello. पहले आने तो दो, मार्च से पहले नहीं आने वाली, exactly. These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now, and move him to... sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I लक्षण ठीक नहीं actually लग रहे made some कौशल snacks तुम्हारे. and tea for काय her. कौशल? बीच पे जाके चाय पीऊंगा क्लोरीन के साथ. If you know what I mean. And she doesn't want to drink with you. She'll only drink with. Seriously. Linnaeus finally began to stop tensing the muscles on his face. It seems like he just said. पोचिंकी गए थे क्या? Are you okay? अच्छा. BGMI खेलने गए थे. I'll be fine. अरे दिवाली कब है They're all guys? here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look alright. ये क्रिमिनल लोग के साथ चाय पीने में क्या मिला? क्रिमिनल My थोड़ी है, hands वार्डन and है. feet are still a bit weak, but that's... I'm back, everyone. संडे को है, अच्छा. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Fremine? He'll be fine. But for now... His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the Yeah, I'll take him from this side. On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Once... The Duke and Clarande are gone. They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clarande will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. ये भी ठीक रहेगा. फोरिना खेल के देखे. You need a lot of healing. बहुत ज़्यादा HP खा जाती है. और कितना बड़ा है? मैं ज़रा आपने जाके 20 प्रीमोजेम्स ले आऊँ पहले, नहीं तो छूट जाएगा. 20 प्रीमोजेम्स very important. And more you have Shongli. Everyone has Shongli. Thank you for... चलो अब वापस जाती हूँ.
दोस्तन के पास नहीं था, उसने खेला ही कितना है। मेरी नाइदा से ज़्यादा ना डैमेज ये अल्हेतम देता है, पता है, और इसको मैं यूज़ भी नहीं करती ज़्यादा। आजा भाई, लिफ्ट क्यों नहीं आ रहा? हाँ थोड़ा लाइफ में फंस गया वो, उसको खेल नहीं पा रहा है अब। क्रिकेट वगैरह देखता हूँ, उसके इंटरेस्ट थोड़े अलग हैं तो। नहीं तो डीपीएस है आपकी, आपका लेकिन ज़्यादा डैमेज होगा। डुअल बनाना था मेरे को, पर आर्टिफैक्ट मिल ही नहीं रहे। Here you are. Let's begin. मैं ना ये आया तो जब आया था ना तो ऐसे कर रहा था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो कूल, इतना कूल एनिमेशन एंड ये देखकर इतना कूल लगता था। गानियो चाहिए यार, गानियो, परमा फ्रीज क्राउड कंट्रोल। ऊपर कैसे जाऊं मैं, रास्ता कहाँ है? The wind rises. Quit following me. Squall and fury. Quit following me. एलिवेटर लेके जाना होगा। ऑब्वियसली लेते हैं मेन डीपीएस, नहीं था सब डीपीएस हमसे पड़ा। अरे हिलचल को हिलचल तो इससे भी मर जाएंगे। गानियो क्या करेंगे? वो बेसिकली क्या करना है कि आयातो का अल्ट और गानियो का अल्ट दोनों का साथ में ऑन कर दूंगे, परमा फ्रीज, समझ रहे हो? और फिर वो कर दूंगे काजुआ, तीनों का अल्ट, इजी पीजी, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर बताएं अब तो पहुंच ही गया। क्या टेलीपोर्ट यूज करें? Squall and fury. Neither needs your Alatium to do more damage. यार मैं 4 अलग अलग एलिमेंट रख लेती हूँ टीम में ना। Sorry रे बाबा। He's awake. Freminic. We're all here. The infirmary at the Fortress of Mirapede, Mr. How do you feel? अब तक जब क्लोरीन नहीं आएगी तब तक शांति नहीं रहेगी। अरे 4 महीने हैं, चल 5 महीने हैं क्लोरीन को आने में। Traveler. The sea. क्रायो यूज कम हो गया है डेंड्रो आने के बाद। हाँ नहीं वो तो सही बात है। Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really अब serious. इसमें तुम एक बार भी नहीं लेगा ना कौशल मेरा आया का तो नहीं लेगा ना एक बार भी? I don't know why it's there, but no one should touch it. Pipes. क्लोरीन के पहले में क्लाउड ट्रेनर अर्लेचिनो पहले आ रहा है, मतलब पहले आ रही है दोनों। Right, the pipes. It's all coming back to me now. रेगुलर वाटर में प्राइमोर्डियल सी वाटर मिक्स हो गया है, ऐसे कैसे? एमेनोमा। I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned.
Where could Master Child be? अच्छा हमें ये एक्सप्लोर करना है डोमेन प्रेमिनेस है पहले मेरे को लगा ना ये क्या बोलते हैं वो होगा बेल यूज करने वाला को तो मैंने बेल 90 लेवल कर लिया फिर मुझे पता चला ना मेरे को ये मिला और इसका वेपन भी बेल नहीं है that was so bad चाहिए था मेरे को वैसे ये क्यूट ही है 4.4 में नाइदा आ रही है आपको बोला था ये फ्री में मिलेगा तो पुल नहीं करने कहाँ मिला फ्री में कब आएगा फ्री में फाउंटेन आए कितने दिन हो गए कोशिश करा मैंने बट नहीं मिला This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? कुछ दिन में मिलेगा अच्छा अरे ऊपर कैसे बुलाऊं उसको मैं शेडोज 4 स्टार हाँ 4 स्टार अच्छा डिजाइन है उसका भी आई पैच वाली ना मुझे वेपन बैनर पे दिया ये मैं तो पुल भी नहीं करा नहीं मैंने कोशिश करी नहीं मिला This is where the water starts. Master Child probably dived into the water. Vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. Oh, there are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Hi, Krishna. Wait. What the? My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. होती तो यूला और उसका वेपन लेता रिप्टा नारी चाइल्ड एलन मेरे को सिर्फ बो वाले कैरेक्टर्स नहीं पसंद अच्छा हेल डिग्रेड हो रही है इसकी व्हाट द फक Miklasha. Hi Krishna. I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. तिनहारी का वो तो ऑटो अटैक है तो उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती पता है
So, in other words, the trail you were following गया तो vanished, गया and कहाँ you had child? no Child idea का where पता लगा Master कि मेरे को Childs could have बताना। gone. But there was also no obvious place इतना for him to सारा have आगे जाके भाग गया disappeared वो। to. That's right. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress. Or Miss Clarande, you say? You're still too weak for Monet. You can go. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come to. You should ask His Grace about that. He'll be able to. Yeah, it's about time he actually पूछ told भी us रहे हो, what's बोल going रहे on. बताना भी नहीं। Wanna एक्ट come करने with us, चाइल्ड Lenny? के साथ जो हुआ। अच्छा कुछ होने वाला। ये तुम्हें कैसे, तुमने तो खेला नहीं, तुम्हें कैसे पता? किसी और को स्ट्रीम पे देख लिया क्या गुंजन आप? No, please go on without me. तीन से I don't गायब wanna है leave चाइल्ड, just पता नहीं yet. कहाँ गायब हो गया है। Lenny. The इतना logical ड्रामाबाजी part हो of गया my उसकी brain वजह is से। aware that we're safe right now, but I still can't bring my... Understood. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. Thank you. मैंने कटसीन देखा था वाईटी वीडियो में। अच्छा मतलब आपको सब मालूम है पहले से। मेरे को मत बताना भाई, वो मेरा कटसीन्स वगैरह नहीं देखती, मैं डेमो भी नहीं देखती या कुछ भी ऐसे वो ट्रेलर वगैरह। कैचअप कर लूंगी फिर देखूंगी। हार्बिंजर के अराउंड पूरा क्वेस्ट घूम रहा है, मतलब स्पॉइलर ले लिया। नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने कोई ट्रेलर नहीं देखा पता। मेरे को तो विंग देख देख के इतनी जेलसी हो रही है। कौशल के पास जो विंग है इतना सुंदर है वो, अमेज़न प्राइम वाला। वापस आएगा भी नहीं वो कभी, पता है? ये रन का वो यूज नहीं है ज्यादा, ई स्किल और बर्स्ट मास्टर है। हाँ Too slow. Excuse me. I take it Mr. Fremenet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewien? I wanted to check up on Miss Clarande. Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. अच्छा वो न्यूले तो आया ही नहीं। All right. Thank you. Well, want to explain? Of course, but I'm not partial to the word choice out. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can. Then Paimon will begin. No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. मैं ज़्यादा सोने गुड नाइट क्वेस्ट भी खत्म है आपका ऑलमोस्ट। ओके गुड नाइट। Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went, so I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Linny's group would just do your work for you! You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremenet has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matter. Are the rumors true? That you're also a former criminal? Now, why would you put it like that?
Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right. Paimon wanted to ask. कितनी देर के लिए ये बोल रही है बस खत्म होने वाला है. Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was... You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. बताओ Forbidden Zone All में I क्या need to है? prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. देखा रही इसलिए करना नहीं. वो उसने बोला कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे बैठ के काम करना is like a punishment in itself ना. Like being having this job like पूरे दिन यही पड़े रहो. वाला मंगल स्क्रिबल नहीं आज नहीं आज सोने चले जाऊंगे मैं नींद में हूँ थोड़ी. बस उठता है ऑफिस जा रहे हैं मेरे को सो. You make a compelling case. Yeah, Paimon really wants to... Even if the truth may not be pleasant. Follow me. ये खत्म करके सोने जा रही हूँ मैं. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you forgot. अब क्या है नीचे? Stand on the central No plate. people will sleep. Yeah. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! कितना बचा है मेरे को बताना. Once everyone is taken the position of the circular plate, it begins to move slowly down. So, 20 minutes this और बचे हैं. is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, fighting Paimon नहीं sure है क्या? doesn't see anything. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. क्या Forbidden Door से Generally हम क्या सीधे speaking, I'm कामरे the only पहुंच one who's जाएंगे? allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. अच्छा. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself वालों की before help कर रही है, deciding whether or बताओ. not to tell them. Scatter! Huh. So there's a switch on the side. Stand back. Whoa! They all just went up one by one. Go on, have a look. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. Paimon asked him. बता नहीं रही थी, पूछ रही थी कि ये rumor है क्या? Is The it readings true? on that dashboard Obviously, have it's not true. budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? The water pressure. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary.
The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, Global the water warming. pressure Bye-bye, is more bye-bye. likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Yes. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of an... But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, it's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history. Indeed. It's just as the prophecy says. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Let's go somewhere else. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? No need to panic, you two. I've already told them about our... What? At
After you warned us not to tell a single... I'm skeptical as well. Are you The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if your grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. He's the one who blew the whole institute sky high. Everyone knew he was a bit crooked in the head, but you're not a local, so I guess it's possible for you not to have... Edwin's main areas of research were archeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. You want to blow up the fortress of... What a lovely idea. Gotta admit, I'm tempted... Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. Oof. Hey, guy. What a huge ship! This is also a production zone that Paimon's never seen before. How much do you know about Fontanian history? Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria, and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story. Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. ये ना basically पूरा biblical हो गया जैसे वो नोआज आर्क वाला सीन है ना उसमें क्या बोला था गॉड ने बोला था कि पानी में डूब जाएगा पूरा अर्थ so what he did was like built an ark for I don't know like 25 50 70 years and then when he फिर सही में बाढ़ आ जाती है तो what he does is like take couple of animals and some few peoples and his family into that ark and they're the only people who survive. So you know वही वाला like पूरा concept है तो ये कुरान में भी है same story और बाइबल में भी है so वही वाला same story I think यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं तो ये you know जब फाउंटेन पूरा डूबने वाला तो ये लोग अपना शिप बना रहे हैं. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Noah's Ark वाला Noah's Ark बोलते हैं उसको. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to. Were the workers to find out the truth behind the ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. So जाओ ना. Noah's Ark देखो. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. सबसे पहले जापान डूबेगा. Yes. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. जो अफ्रीका है that is splitting उसके जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अलग हो रहे हैं और अफ्रीका will split in 2 halves. Seems like you're good. In few million years. I'll take you back. I'll leave you here for now. नहीं अफ्रीका स्प्लिट हो रहा है बेसिकली इंडिया की तरफ जो फेसिंग वाला हाफ है वो अलग टूट के हट जाएगा. भविष्य में लिखा भी लिखा है वर्ल्ड विल एंड बाय 2032. 2012 में क्यों नहीं हुआ यार? No worries.
But don't forget, 2012 it's में up जब to हो you रहा था, I was whether or not you wondering कि want to like share मेरे को what you 12th just बोर्ड्स saw. के लिए पढ़ना चाहिए या नहीं? What you do from here on out will likely affect those three as well. Yeah, we'll put a lot of thought in. Great. मी गो स्लीप. अच्छा तुम थे क्या यहाँ पे? चलो बाय बाय, गुड नाइट. कितना बचा है? हो गया ना? आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म हो गया. बढ़िया है. आर्कॉन क्वेस्ट करो, तुम्हारे कॉम्स ऐसे ही हो जाएंगे. गुड नाइट, गुड नाइट. नहीं 15 मिनट और है. तुमने तो 20 मिनट बोला. चलो खत्म करके ही जाते हैं. अभी भी क्या चल रहा है? 8-4 ही चल रहा है ना. ज़्यादा क्वेस्ट नहीं है करने को मेरे पास, थोड़ा सा ही है. मतलब वर्ल्ड क्वेस्ट. सुमेर का तो सब हो गया. हाँ तो 5 मिनट हुए हैं. अभी 5 मिनट ही हुए इतनी देर से, क्योंकि भविष्य मलिका में नहीं लिखा था. चलो ठीक है, विल वेट फॉर 2032 देन. राजदीप, Welcome back. हाय. Do you want a बबलू cup ब्लू of tea? टी-शर्ट. हेलो बबलू ब्लू टी-शर्ट. चाय पी रहे? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. स्टोरी के पीछे कवि क्या Actually, कहना now चाहते that हैं you उसमें mention it, I time just लगा. remembered something now. अच्छा. While I was sedated, I could still barely hear two people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and... Must have been Risley and Sijui. Yeah, I heard one male voice and one female, so... I really can't make sense of... So, Traveler, Paimon, were you You able to forgot learn me? Yes, I anything from forgot Risley? you. Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time. Nobody else is around, and Miss Sijuin is also... All right, then I'll posit my theories. I asked myself three... Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Merope. Ooh, he's good. He got that right on. That's our Lenny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. कैसे हो? Why? मैं ठीक हूँ. तुम कैसे हो? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find What's more, the fortress of Meropide is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. King है यहाँ का. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. As long as Fortress doesn't do anything about much. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but... You're super smart. Thanks so much. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him. I don't have enough information, so I... क्यों शेयर कर रही है ये फतुई वाली सारी चीजें? पागल है क्या? Why sharing this all the emphasis? Let's see. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. Or perhaps he didn't know, and just wanted to bring Father over to his side? Which could be why he said he... Yeah, that makes sense to me. I understand your concern. The two of you have already aided us far too much. If you ever need anything else going forward, though you may not share the sentiment,
After all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. 30 likes, 30 likes. Bablu, like karo. You have my gratitude. Thank you for protecting Linny when it... Why are you being so formal all of a sudden? Paimon's hungry. Oh, Alright, then we'll... Wind rises. दिख रहा है 30 मतलब. It's time for dinner. Welfare. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner. Huh. You're right. She's... What would you like to eat? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Then I'll have the tastiest stuff you have to offer. Me too! Don't forget... No problem. So delicious. Is this how it feels to be freeloaders? Feeling full yet? How's the food? Delicious! I'm so glad to see you. Sijuin, do you do this to help your patients or... A bit of both, I suppose. I'm a melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking of. You're really good at taking care of people. Really? Here am I. Oh, and what did you mean back in Risley's office? When you said... Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. Thankfully, Clorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Clorand left, to make sure that Linne wouldn't impulsively... Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Clorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linne as well. We had to press him, but you were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been our leader. है ना, वो उसने किया है. बाकी इनके voice overs के लिए they hired like Chinese people, Korean, I feel like he'd like Japanese, it here. English. With all the darkness and 4 chaos. languages में. Chinese. Get a good night's rest. अभी भी खत्म नहीं हुआ आर्कन क्वेस्ट. बताओ यार. है जी. ये कैसे मर गया? बिना कुछ किए. What glitch was that? खाना खा के मर गया ये बैठे बैठे. अभी स्टार्ट होगा मेन सीन. अभी मेन सीन होगा. अच्छा मेरे ब्लॉग खत्म भाई. टाटा बाय बाय. मैं वो कह रही थी ये कैसे मर गया मेरा खाना खाते. Too slow. डॉर्मिटरीज के लिए ऊपर जाऊंगी. The wind rises. जंप करते हुए का सीन आया. ओह, you're right. Squall and fury. सीन एंड होता है. हाँ. मैं सोचा खाना खा के मर गया. So much is... चलो जाओ सोने भाई. अरे बाप रे खराटे दे दिया. Delicious. I'm on 1 seconds. Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! क्या हो गया? Who's... What happened? Why is everyone running around?
No time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They're here! Yeah, there you are! Oh, thank goodness! Quisto and Laveroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Laveroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away as... Oh no, it can't be that thing! Whoa, wait, what? What? Hey! We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Hey, hey! Be kept! Hi, Om Sharma. Attention! Please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. So this is getting really interesting. Layer, then try to move as far outwards as possible. उसको लगा कुछ दिन है उसके पास बोट के लिए। हिम्मत है तेरी मोटू, मैं तो 5 मिनट नहीं बैठ सकूंगा। क्यों? इधर पानी लीक हो गया और आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मजे वाला सीन है, पता है। They're here. Just like I said. What happened? You're just in time. But be ready to run. ये क्यों लड़ रहा है? इसको पानी लगेगा तो ये भी चला जाएगा। Three, two, one. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. This is so good. minutes more. Chat ignored but bye. Hello bola maine. Traveler, Furina will soon be meeting with the knave there. You must protect Furina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have... फरीना के पास जाना है मैं। वैसे ट्रैवलर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, इट्स जस्ट फाउंटेन के जो लोग होंगे वही पानी में डूब जाएंगे, बाहर वालों को कुछ असर नहीं पड़ता ना। Look, there are a ton of Fatilian Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Furina to the best.
ट्रैवलर तो पानी पी चुका है, नाविया को मारने में। हाँ, ट्रैवलर ने और पाइमॉन ने तो पानी पी चुका है। अरे भाई, ये इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है? हाय हेलो 2 बार बोल दो फिर भी बोलते चैट इग्नोर, चैट इग्नोर। म्यूट करके देखते स्ट्रीम, मुझे लगता है। ट्रैवलर तो हाँ, चलो अभी इसका देखते क्या कन्वर्सेशन होगा। मेरे पीठ पे तो वहाँ पानी भर गया पूरा। ये है Oh, देव। so you two are the honored guests, Miss Furina. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must all— It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the knave. The head of the House of Art and the Lenny siblings' father. The Lenny siblings' father, she certainly does not seem easy to deal with. I've already prepared seats for you. Come. Perhaps you two are unaware of how Miss Furina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Furina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Furina and I. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Furina. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Neuvillette. Coming. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Mirapede. And where did he go after leaving the fortress? Well? The Fortress of Mirapede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim इसको for भी it. नोसिस चाहिए. Do हाँ, you have obviously any नोसिस proof के that लिए he तो ये लोग आए surfaced हैं. safely? The Fortress lies beneath the waves. Unless he pranced out of the main gate, he must have had to swim for it. But there was no evidence that he's been injured or killed. Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago, since he was unfortunately unavailable. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the Opera House. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Huh? Hold on. The water in the teacup is shaking. Earthquake. I suppose this is also a sign of things to come. कलयुग है एकदम real. Huh? I don't quite RP understand कौन सी what RP? you're trying to say. हो गए तुम? एंट्री मिल गई तुम्हें उधर? Have we entered into the next stage of the prophecy?
न्यूले क्या करेगा? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. क्या किया इसने? A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. Hydro Dragon का power. मतलब he has a power to control the water. Let me guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the He already has tons of tea in his office. I'm thinking... That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness. Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Marmonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. अब बचाया हो गया अनमोल. I must say, we've Miss Furina. As the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong.
I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. Then I ask you, Miss Furina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not Oh, that look in your... The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Furina, what is the purpose of your oratrice mécanique d'analyse cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the year? The oratrice? It's... So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Furina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Miss Furina, I suppose you... Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Furina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. Iodix. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? You too, Pipe. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my... You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Furina's table. And I was merely catering to Miss Furina's tastes. It is getting late. Why don't we... Very well. Will... Mind seeing me off, traveler? Paimon's coming... और कितना बचा है? इसको बाय बाय भी करके आना है. मुझे लगा मैं का तुम्हारी खुद की क्रिएशन है. मतलब म्याओ का सा कैरेक्टर नहीं, मिकासा कैरेक्टर है. ये मैंने अपना नाम दिया है यहाँ पर. Oh my God, you can just edit your profile and edit your name, edit nickname.
Meow. Genshin Impact में नहीं है। गेम बाद में आया, मैंने I'm स्ट्रीमिंग चैनल glad पहले that खोला you were था। willing to come with me. Of course, child was just an My bad, excuse. sorry. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth, as their father. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them. Especially Linny. You mean Ridesley. Hi Shadows, He's hello. a tricky सोई नहीं, one to मेरे deal को बड़ी with. जोर की नींद आ रही है। By the way, and you can just consider this. You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of... Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparation? No need. I need to meet with Furina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating... Oh? Come over here, you little critter, you! अच्छा ये पूरा ऐसे आप सोई नहीं है अभी तक? बस 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 ये देखो ना पूरा वो बना के छुप के देख रही थी। बिल्लियाँ पकड़ रही है फरीना। You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Furina to be handed to me on a silver platter. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me! Good night, good I'm night. begging you, please! The fear in her pupils is genuine. So perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Furina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Furina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have... Yes, Father. My dear children. News from the Fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Ridesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine. Set up a meeting for me. I would... Oh, and I... Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I cannot. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the Fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering.
तो उसको चाइल्ड से मतलब ही नहीं था, उसको बस उसके पास जाना था नोसिस का पता लगाने। You should know the rest. Lenny's group is quite close to you. So, they... You attacked the Hydro... It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After a... I've now had 2 chances to enjoy tea with Furina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had... I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Eudex Neuvillette or Furina, neither fits the bill. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not... It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other. Neuvillette? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized event... Thank you for protecting Furina. To put it simply, I used my power to force back the Primordial Sea and reseal the sluice gate. So as expected, permission granted. You have enough power to force back Primordial Sea. Does this mean you have some deeper connection with the Hydro Archon? Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? You can't tell us? Then... If by the phrase, you guys, you are referring to Furina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions. I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn that... Huh? Why is it raining ये all sad of हो a जाता sudden? है तो बारिश होने लग जाती है. You may be closer to the truth. Oh? And what are you thinking? He's the dragon sovereign of water. The dragon of... Huh? बैन हो गए. कौन? नहीं यार, वो WFS में बहुत लेट बुलाया, मतलब 1.5 घंटे बाद, तो मैं जा नहीं पाई. कल जाऊंगी. बैन हो गए. तुम क्यों बैन हो गए? Please do not be so अभी तो आए थे. surprised. पता नहीं. My apologies. क्यों? We were just guessing randomly. देखता हूँ. We didn't guess क्या right, सर में did इंटर नहीं we? कर पा रहे? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. कल आ जाऊंगा फिर से. There's still something Paimon wants to ask you, क्या though. सीन है? अभी तो सर्वर में ही थे ना थोड़ी देर पहले. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included,
possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. When the first usurper arrived and they seized the part of the dragon's power, today the stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to do. Oh, so I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. मैं तो गई नहीं 2 दिन से सर्वर में नहीं गई मैं. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the fortress of Meripede? Paimon is a little worried. We'll see you another time. चुप करा दी, भगा दी उसकी. अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बचा है. बचा है जहर तो आप लग रहे हो हैं. बस हो गया यार, मेरे को नींद आ रही है. लेकिन डिफेंस परसेंटेज कितना बड़ा स्टोरी क्वेस्ट है. अरे भाई वर्ल्ड में सब घुसे जा रहे हैं, सबको चाहिए सामान. 127 ओके. और कितना बचा है? मेन पार्ट हो गया. अभी क्या है इधर फोर्ट्रेस में रिपीट में कितना दे रहा है? मुझे को लगा हो गए, गप्पे मार लिए, खत्म. देखो कितने सारे लोग ऑनलाइन हैं आज. सबने अपनी फुरीना डीपी लगा ली. सबने कल सपने में आपको देखा. अच्छा हाइड्रो डैमेज बोनस मैंने ना इसका देख के लगाया था. Here you are. आ रही है रोने की आवाज. सपने में आप मैजिक देख रहे थे. हाँ लिनी का मैजिक देख रहे थे. लिनी जादूगर है ना. चलो गाइस गुड नाइट. कल मिलते. बाय बाय.